JNPT के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो प्रदीप जी बहुत ही जल्द हम लोग सिर्फ भारतीय हैं, भारत, नो इंडियंस। ये इंडियन शब्द जो है ये इट्स अ कॉलोनियल हैंगओवर एंड शैल बी consigned to the pages of history. Yes, that's it. After all, it's the Greeks who brought this over here, and the Greeks themselves are in a bit of a problem. So, as on today, we are having a international presence everywhere. That's so right. We need to go back to the roots, and the roots have been prompted by Rahul Gandhi's India. I'm not so sure. And जो सोचा भी नहीं था उस चीज को हासिल कर दिया। इनफैक्ट बार आई रिमेम्बर व्हेन वी डिस्कसिंग आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी बार इस चीज को ही यूज्ड टू ट्राई टू पुश इट दैट भारत इज इंडिया, भारत इज इंडिया। इंडिया में ये होता है, क्राइम होता है, हर चीज होता है, बट भारत में नहीं होता, बिकॉज भारत हमारा संस्कृति है। एंड अल्टीमेटली राहुल गांधी हेल्प्ड हिम टू अचीव हिज गोल। इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट, हम लोग अगर किसी को देना तारीफ करना हो तो राहुल गांधी जी का। इंडिया आपने बना दिया, इंडिया बार आपने दो मीटिंग कर दिया, एंड अल्टीमेटली जो सोचा भी नहीं था, बिकॉज एवरीबॉडी न्यू यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑन द एजेंडा, वुमेन्स रिजर्वेशन प्रॉब्लम मोदी जी दिल से लेके रखा है, दैट माइट बी द एजेंडा। राम मंदिर तो हासिल कर ही दिया है, आर्टिकल 370 हासिल कर ही दिया है, बाकी रह क्या गया? अब भारत ऑटोमेटिकली ये एजेंडा भी आ गया है। तो कृष्ण जन्मस्थान और काशी विश्वनाथ सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग। एग्जैक्टली सर। अमर ज्योतिर्लिंग, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग। मुझे लगता है बहुत ही जल्द वहां पर भी मंदिर बनेगा। और जहां तक इंडिया का सवाल है, ये इंडिया अलायंस ने अब भारत को असल में भारत बना दिया लग रहा है। प्रदीप जी बिल्कुल वैसे ही जैसे राम मंदिर का अगर क्रेडिट किसी को देना है तो अरुण नेहरू साहब को देना पड़ेगा साहब, सीधी बात है। वो फैजाबाद में मस्जिद के ताले उन्होंने खुलवाए, और उसके बाद राजीव गांधी जी ने 1989 में ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने जाकर के भूमि पूजन किया। साहब मानना पड़ेगा। आई थिंक द बीजेपी मस्ट एक्नॉलेज दैट। लेट्स आस्क मिस्टर भालचंद शीर्षट। भालचंद शीर्षट साहब नमस्कार। डू वी हैव अ गेस्ट विद अस? इज मिस्टर शीर्षट विद अस? यस। नमस्कार सर, नमस्कार। आई कांट हियर यू, कैन वी चेक? नमस्कार। आ गई आवाज, आ गई सर, आपकी बड़ी फर्स्ट क्लास आवाज आ गई, जबरदस्त। तो अब इंडिया इज हिस्ट्री, वी आर नाउ भारत, ओनली भारत, नॉट इंडिया दैट इज भारत, वी आर भारत, दैट इज इट। नहीं, I will like to correct. जी, India is not our history. Our history is भारत. भारत नाम का एक राजा था जी, वहां से भारत ये देश ऐसा नामकरण हुआ, ये हमारा इतिहास है। दिस इज आवर हिस्ट्री। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, वहां से बना भारत। और उसके पहले यजुर्वेद में भारत खंड नाम का भी नाम है पूरे भारतवर्ष के लिए। ये भी है, ऐसी बात नहीं। बट आई टेल यू व्हाट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। इनफैक्ट आई फील वेरी गुड अबाउट इट। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है साहब कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री के जितने भी सिंबल्स हैं उनको अगर हम लोग अलविदा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, करना भी चाहिए। वी मस्ट हैव आवर ओन हिस्ट्री भाई, आवर ओन हिस्ट्री, आवर ओन एवरीथिंग। ऐसी क्या बात है? मतलब सीधी सादी बात है कि क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे 200 साल तक राज किया, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा अंग्रेजों ने बनाया, उसकी वजह से आज हम लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, विच इज एन एसेट बाय द वे। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर के इंटरनेशनल ट्रेड में अंग्रेजी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन फिर भी सर आप कुछ बोलने जा रहे हैं, बोलिए। That is not happening in Japan. That is not in Germany. That is not in France. Are they behind the technology? They are using French, they are using Japanese, they are using Germany, they are learning in their own mother tongue. So English is not an asset. It is, we feel it is an asset. If English would have been asset,
then China would not have survived, Japan would not have survived. Sir, more than 58% of all CEOs of all Fortune 500 companies are Indians. And it is widely acknowledged that one of the assets is the fact, of course, they're great at their jobs. The other thing also is that they're very good at English. But then that's taking it into a different terrain altogether. चलिए साहब, वो तो जब अभी पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होगा, स्पेशल सेशन जब होगा, तब ये सब आगे डिस्कस करने को मिलेगा. लेकिन ये बताएं सर, मराठा आरक्षण का जो जीआर है अब निकलने वाला है, तकरीबन तय हो गया है. तो सर ये बताएं, सिर्फ कुनबी सर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है? सिर्फ जो कुनबी हैं मराठा में, कुनबी, और वो भी मराठवाड़ा से, सिर्फ उन्हीं को क्यों मिल रहा है, बाकी सबको क्यों नहीं? कुछ जरा रोशनी डालें, बिकॉज़ आई एम कंफ्यूज्ड. सर प्लीज. Basically, Maratha, if you go back to the history of 500 years back, there was no caste like Maratha. There used to be Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. So Maratha करके कोई कास्ट नहीं था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो regime आया, in that regime, the people who were working in the farms, many farmers, they took up, not only farmers, they took up sword in their hand. Not only farmers but Brahmins, Vaishya, everybody took sword in their hand for the sake of Swaraj, and then that became Maratha community. Yes. So Maratha community is a basically Kshatriya community fighting and protecting the rule, and that is why that is Maratha. So in Maratha community, majority are Kunbis. Kunbis means those who are working in the farm, farmers. Either they are owning the farm or they are laborers in the farm. So they are doing very hard work in the farm, and they are that farming is a seasonal business again. So they joined army of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and if you check the army, they were coming for the war, then going back and farming. Tanaji Malusari, basically a farmer, farming, and after farming, whenever he is free, he used to join, or whenever required, he used to join the war, keeping aside the farming job. So these are farmers, so they are known as Kunbi. Yes. So these Kunbis are already in OBC caste. Kunbis are already in OBC caste. So if somebody can be labeled as Kunbi, he will automatically come in OBC caste. But one who is not having proof of being Kunbi, he should be labeled as Kunbi. So I am just wondering how one can be labeled as Kunbi today when previous track record is not there, and if he is labeled as Kunbi and then listed in OBC list, will it stand in the court? All these legal points are to be taken into consideration. The reservation must be given to Marathas. It was given to Marathas when Honorable Devendra ji was then Chief Minister. Yes. Somehow, because of negligence of government of Uddhav Thackeray ji, the Maratha Arakshan was squashed by Supreme Court. If we could have put proper representation that time. So this reservation is only for education and service. So they must get this reservation, but just labeling them could be randomly. Some people are having certificate of Kunbi, they will definitely get it. But those who are not having any record of Kunbi, I think how it will happen, I am also wondering. Yes, and not only that, not just Kunbi, the fact remains that there are about 96 castes. 96 कुल है ना मराठों में. So are we looking at giving reservations across the board, or will they be given, all these 96 different castes be given reservations separately? What is the plan, sir? It is really difficult. It is really difficult to segregate amongst Marathas. Ji. Marathas in Jalna, Marathas in Aurangabad, Marathas in Konkan, they are different. So some are having Kunbi certificate, some are having Kunbi background, but majority are not having Kunbi background. Yes. So those who are not having any background of Kunbi, or they are not farming, they cannot be suddenly labeled as Maratha. And then the Supreme Court will again come into picture. They will ask you how you have labeled them.
we should be able to justify whatever decision government is taking, because the case will definitely go to Supreme Court, Yes. and Supreme Court will give their verdict based on the facts and figures. So facts and figures are to be published, and all categories in Maratha community cannot be labeled as Kunbi. That is the problem. Correct. शिरसाट साहब, the OBC महासंघ अध्यक्ष ताईवाड़े जी बोले कि no, ताईवाड़े जी he said very clearly that if you include take it from our proportion, हमारे जो reservations है उसमें आप मराठा को देंगे, then भी state wide agitation होगा. Now the government किस प्रकार से adjust करेंगे? Because a few days ago Vijay Vegatiwar was saying give it out to the OBCs. Then Chhagan Bhujbal साहब बोले कि how can you give it from the OBCs? You can't give it from the OBC allotted because there will be again a big problem, social charge हो जाएगा. So the government has a very little manuring point. Where can it have this excess reservation for Marathas from where? Because OBC will come out on the streets. That's already, उनके leader already बोल चुके हैं. How are you going to do it, Shirsat साहब? See, basically the vision, thought process of BJP and Honorable then Chief Minister Devendra Fadnavis and today's Chief Minister Eknathshinde ji, Ajit Dada Pawar is very clear that we want to give reservation to Marathas not from the OBC quota. It will be over and above OBC quota. It will be different quota, educational, and for the sake of service, the reservation will be given over and above OBC quota. OBC quota is not to be disturbed. That is the mistake made by Vijay Vegatiwar. He made a statement, give reservation from OBC. So disturb OBC and give us reservation. That is what Vijay Vegatiwar said on first day. Second day he said, no, OBC should not be disturbed. Our stand is very clear. BJP has decided to give reservation to Maratha without touching percentage of OBC, without disturbing OBC. So if Kunbi is added, Kunbi is already OBC. If Maratha labeled as Kunbi, they will go into OBC. So OBC reservation quota will be disturbed. That will not be done by this government. Government does not intend to do that. So which means sir, तो शिरसत साहब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा ना, कि मतलब that means it'll have to go above 50%. So how will we manage that? But I tell you what, please correct me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong. I remember when Narasimha Rao was the Chief Minister of Andhra Pradesh, he had got the reservation up to almost 75%, and 50% plus 25% still remains in Andhra Pradesh. Nobody has disturbed it. So if they can do it, perhaps that is a model to follow. Sir. Yeah, that is what we have already followed. When Honorable Devendra Fadnavis was Chief Minister, he has given the reservation. It went to High Court. High Court upheld the resolution. Yes. But in Supreme Court that time, Honorable Devendra Fadnavis was not in power. Honorable Uddhav Thackeray was the Chief Minister. He has not paid attention. They have not given enough data to the lawyers fighting the case on behalf of Maharashtra government, and we lost in Supreme Court in the era of Uddhav Thackeray, who was never in favor of Maratha reservation. Because when Maratha Long March was there, he said it is not Muka Morcha, it is not Muka Morcha, it is Muka Morcha. So his approach to Maratha reservation was always negative, and we lost during that. Now again we have to go to Supreme Court, High Court and prove, yes, over and above reservation is required, and what court will ask when government is giving over and above 50% reservation, what is the necessity? That government will have to prove and satisfy the court, so it will stand. It is there, even in I think Tamil Nadu it is there, Andhra Pradesh it is there. Yes. If other states if it is there, then why not in Maharashtra? It will be done in Maharashtra. Shirsat said, moving away from this topic slowly, Sonia Gandhi ji has written a letter to the Prime Minister, Mr. Modi. Sonia Gandhi ji said the suspense over the special session called by the BJP Parliament. Now, special session, the agenda is hidden. That is what Sonia Gandhi is saying.
Sonia Gandhi says that these things should be discussed. One thing is clean sheet given to China. Manipur constitutional breakdown, price rise, unemployment, falling incomes, farmers, downside just because the farmers atrocities ho raha hai, MSMEs shut down. So Sonia Gandhi has written a letter and said the suspense over. This special session should be over. You are keeping the entire opposition in the dark, Mr. Modi. Please, you include these things that all these A to Z जो उन्होंने mention किया. How do you see it? Is Prime Minister Modi keeping the opposition in the dark, Shirshad Saab? See, the parliament session is over, I think, just 3-4 weeks back. In that session, there was a discussion on Manipur, but opposition has not allowed to carry out the discussion. They have walked out. They have not allowed the discussion. Mr. Amit Shah repeatedly requested them, let us discuss on Manipur on the floor of the house. Why they ran away? Why they ran away from the discussion? So when Manipur discussion was held, they ran away. In last 5 years, there were various opportunities to discuss the employment and unemployment and other issues which Sonia Gandhi feels today. What she has jotted down on a piece of paper today is their election agenda. It is not parliamentary agenda. So they don't want discussion. If the discussion starts on any issue, they will make sure discussion will not take place, because if discussion takes place, questions will be raised and the government will give satisfactory answers and people at large will understand, because this parliamentary working is transparent. It's on television. People will come to know what is the reality. So they don't want to face the reality. They want to run away from the discussion, run away from the reality. So they are writing, agenda of parliament is not hidden. It will be made clear. Many things are still on card, like women's reservation. Will Sonia Gandhi dare to oppose this reservation? There is one nation, one election. Many things are yet on card. Now, whether they are on the agenda of this parliamentary session or not, it is not known to me. It will be known to everybody. Everything will be transparent. Discussion will take place. Will they have courage to discuss and listen to answer of the government and to vote for or against? Just for the information of our viewers, Tamil Nadu has 69% reservations, by the way, and that has been in existence for the last 30 years, sir. There are only 31% general seats, because even in the scheduled caste, they have a category which is really underprivileged scheduled caste, then scheduled caste, and even among the other backward classes, there are various categories. So if that can be done in Tamil Nadu, in fact Andhra Pradesh has about 72%, sir. So if it can be done in Andhra Pradesh, if it can be done in Tamil Nadu, why not in Maharashtra? It was done in Maharashtra. It was done in Maharashtra. Yes. It was upheld by High Court. Yes. We lost the case in Supreme Court because of negligence of Uddhav Thackeray government. But very strange. Are you trying to tell me that those lawyers who represented us in the Supreme Court did not even bring in the examples of Tamil Nadu and Andhra Pradesh? I mean, they were not given the data. They required to produce the data. Data why the reservation is required. See, yes. State has to justify. It is justified in Tamil Nadu why it is required. Yes. They have to show that they are really underprivileged. Maratha community is underprivileged as far as education is concerned, as far as service is concerned, yes. Financial status is concerned. So that is to be proved, for which data is required. Surveys were carried out. This commission report was there. That should be clarified. So that data communication was not given to the lawyers. 9 lawyers were there. They were repeatedly saying so. Devendra Fadnavis ji was leader of opposition and he was continuously following up. But government never responded. Government has never taken it seriously. Maratha Arakshan was not agenda of Uddhav Thackeray government. And then in Supreme Court, we lost the case because of lack of information. You know, Shirshad Saab, Uddhav Thackeray ji, the Uddhav Thackeray group has been
आलोचना बीजेपी पर कंटिन्यूस आलोचना कर रहे हैं कि जनरल डायर कौन है, जनरल डायर कौन है, किसने मराठाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए बोला, who was it? And he has a very comical way of saying, he says, he describes eknathshinde ji, Dev Fadnavis वगैरह को कि दो full और एक half. This is the way Uddhav Thackeray ji mentions. He says that even if Modi Sahab comes in his Chandrayaan 3, he will not be able to, Dev Fadnavis and the entire group will not be able to win the elections again because you have betrayed the Marathas. That is Uddhav Thackeray ji, Sanjay Raut, everybody says. How are you going to react to that, Shirshar Saab? What will happen in 2024? The polls are there, but what will happen? What will happen in 2024? We will come to know after 1 year. So let us not go by the comment of Uddhav Thackeray when he is losing his ground and ground support, when his people are leaving him every day. Have you heard that somebody has joined, except that Sushma Andare joined year back? Nobody is joining Uddhav Thackeray. Everybody is leaving Uddhav Thackeray. Everybody is leaving Sharad Pawar. People are leaving Congress. So all this Maha Vikas Agadi, Maha Bakas Agadi ho rahi hai. So this Maha Vikas Agadi, which is becoming Maha Bakas Agadi, they will claim that we are winning. They are saying India is going to win. So BJP is afraid. BJP is not at all afraid. We are comfortable. We are going to win, and we will be winning more than 350 seats as a BJP, 350 plus seats in coming parliamentary election. Now let us come to... So 350 plus as NDA or just BJP? Only BJP will be 350. Wow. Plus NDA will be there. So with NDA the figure will definitely increase and it will reach the historic figure which Rajiv Gandhi could achieve in 1984. Yeah. Yes. Amazing. Absolutely amazing. So 350 plus is the figure that you are looking at. Wonderful. Absolutely wonderful. And just Prakar say the Congress, continuously today Mallikarjun Kharge, the same thing. Price rise, inflation, unemployment, farmers, double income. वही हर मंच पर Mallikarjun Kharge वही चिल्ला रहे कि nothing has happened. Sonia Gandhi in a letter also has mentioned we need to discuss on these things. Now, but Prime Minister Modi कुछ और बोले कि he says our inflation is 2% less than the global inflation rate. That is what Mr. Modi says. They said we have done what nobody has achieved. Where the whole world is going through a recession, India has been a pole star guiding. Where business is concerned, the business environment is concerned, development is concerned, we are ahead. So how are you going to match it? Here, आपके पास Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, अभी सोनिया गांधी भी खुद गई है, सब बोल रहे कि things are very bad for the nation. Unemployment at all-time high, inflation. How do you see it, Shirshar Saab? How are you going to counter that? Basically, it is their job because they are in opposition to oppose everything. Whatever good is happening, they are opposing. Whatever bad is happening, they don't understand only. So they are opposing, let them oppose. But public at large, they are aware what is happening. Because of media, people are now very well educated. Earlier, people used to depend on print media, but there were many people who were illiterate, were not able to read papers. But now, everything is available on television, on YouTube, on mobile, by way of reels, by way of various small videos, and people are now available what is happening. The greatest achievement of Modi government is DBT, direct benefit transfer. Whatever benefit which is transmitted from central government goes into direct account of the beneficiary. No commission, no Dalal Raj, and that is why all this India Azadi is disturbed. Because they are not getting any commission anywhere. Anything happens, their commission is not there. Things are so transparent. Then the basic facilities required for the poor, Ujjwala Gas Yojana, toilets, Pradhan Awas Yojana, Ayushman Bharat Yojana, on every front, Roti Kapda Makan,
was the slogan in 1972. Indira Gandhi has given. We have given roti. 80 crore people are getting free food. शीर्षक साहब, मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड इज सुपर. वो नेशनल आप देखोगे, नेशनली ही हैज डन परफॉर्म, मैक्रो लेवल फैंटास्टिक, माइक्रो लेवल हर घर पे, एज यू सेड, हर घर शौचालय, हर घर में पानी, उजाला, everything that everybody wants is there. But the commission जो बोला आपने, commission, you said DBT has reduced commission 100% directly to the beneficiary. But they say 40% commission sarkar in Karnataka. And that stuck, and you lost Karnataka. Now they have come with 50% commission sarkar. They talk about Madhya Pradesh. Sir, allegations might stick. It might stick. They have come up 50% allegation, 50% commission sarkar. Also they said, हम गरीब कल्याण योजना 11 वचन. I think in Karnataka was 5 वचन, यहाँ 11 वचन दे रहे. How do you see, Shirshar Saab? Is it this allegations going to stick where BJP is concerned in Madhya Pradesh? 100% not. Whatever is passed on by the government, central government or state government to the people, it is direct. There is no agent in between. So people are getting direct benefit. There is no question of corruption. When it is coming to big projects, big works, they claim there is a corruption. They claim there is a big corruption in national highway work also. Cost is elevated, escalated. But then Nitin Gadkari ji came forward in the parliament, and on the floor of the parliament he proved why the cost has gone up. Because earlier 4 lane. Earlier it was, no sir, it was 2 lane. Earlier it was 2 lane. Yeah. So various roads, their width was increased, their length was increased, the material was changed. So there is a cost escalation. Plus two tunnels and 4 elevated roads. Yes, last election. Yes. This Sonia Gandhi and her team, they were shouting about Rafael, चौकीदार चोर है. जी. ये सब तो वो बोल रहे, आज भी वही बोल रहे. References are different. Okay, so there is no corruption. There is improvement in quality, improvement in quantity, scale has increased, so cost has increased. So it is not commission, but they are not. लेकिन शीर्षक साहब एक सवाल है चलते चलते आपसे ये जरूर मतलब पूछने की बड़ा अनिवार्य हो जाता है ये पूछना. बार they are not letting the Adani matter go. Now there is the George Soros Foundation. Mr. George Soros has not been a friend of India for a long time. But somehow or the other they come along and present various data, various accounts, etc., and they quote certain foreign newspapers, like for example the Manchester Guardian and the Financial Times London. This time it appeared in the Manchester Guardian and the Financial Times London. The Manchester Guardian anyway has always been somewhat anti-India in its approach. The Financial Times has been neutral so far. Now, do you think this will stick? Or do you think it will go the same way as the Rafale so-called scam? Sir. BJP has nothing to do with this Adani and Adani scams. One thing I will tell you one thing very clearly. See, as you said, these agencies are not, or newspapers are not India friendly. Forget about India friendly. This is a corporate war. Yes. I don't want to name anybody. This is a war between 2 corporates, 3 corporates in the similar business. Who became number 1, who became number 2. Their corporate war is going on, they are fighting. It has nothing to do with Bharatiya Janata Party and government. Government has never supported anyone. Government has not opposed anyone. Corporate war is going on. Stock, share market war is going on. They will fight out their own war. If there are any irregularities, definitely the agencies in place will take action against them and they will be penalized. Nobody will be spared. Whoever is guilty will be punished. Shirshad Sahab, Rahul Gandhi just a few days ago said, उनका कहना था कि जीएसटी एंड नोटबंदी, राहुल गांधी का कहना है कि जीएसटी एंड नोटबंदी ने छोटे छोटे उद्योग को खत्म कर दिया है, छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया. He said, I am telling the Congress ruled states wherever we have a chief minister,
I am giving an instruction that आप बैंक के दरवाजे ये छोटे-छोटे व्यापारियों को खोल दो. We need to bring them up. This GST and notebandi has finished them. That's what Rahul Gandhi is saying. Sir, ये कितना सच है इसमें? Are the small businesses vanished? If they have been destroyed, and if they have been destroyed, is it by GST and notebandi? Shirshar sir. There is recession all over the world, as you said in the beginning. The GDP of America has gone down. Every country is facing difficulty. Recession is there. India is also affected, but India's position is much better than any other country in the world. And as far as the small traders are there, small business people are there, for them Mudra loan is there, government scheme is there, again direct benefit transfer is there, no corruption. So बैंक के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है, पहले से खुले हैं. और खुले कैसे? बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. You did not have to go anywhere. No corruption, no corruption. Everything is online. But you apply online, you get Mudra loan online. So Mudra loan is sanctioned online, and no commission can be demanded by anyone. So बैंक के दरवाजे खोले हैं, व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, तो बचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है. But this is not because of GST. But one thing is there. One thing is there at the moment. GST would have spoiled. Yes. If GST would have spoiled, why the figure of GST is increasing? If businesses are going down, everything is bad. GST is bad. The GST collection figure is increasing every month. Why it is so? But Mr. Shishrat, the fact remains, at the moment, what you mentioned about America, what you did not mention about Europe, but the fact remains, as far as China is concerned, China has now decided not to release their unemployment figures. They have become so unreliable, and the crisis in China, by the way, is so bad that in the Guangzhou province and in a couple of other industrial areas, all industry has shut down, by the way. And I am not saying it, this is not a rumor, it's an actual fact. People have just down shutters and they have gone. The entire real estate bubble of China, in fact 40% of the Chinese miracle was actually based on real estate development. You know, most of the real estate biggies in China have declared bankruptcy. In that sense, because of the transparency in the Indian system, because of our democracy, India has survived. Let's be very clear. And in fact, it's a great opportunity, Mr. Shrisar. Just wanted to pick your brains on that. Considering the fact that most industry is now leaving China, don't you think this is a huge opportunity for us? Shrisar sir? Their industries are leaving China, coming to India, where they find more stable government and more stable policies, and they feel that they can do business here. So China, people are shutting down, people are closing their businesses, coming out. What happens in China after COVID? Everybody is aware. Yes. But China is not a democratic country. Let us keep it aside. Yes. Let us come to Russia, let us come to America, Europe countries. Everywhere case is similar. Yes. Case is similar. The recession is going on. And in that case, when you compare, India is much better. Financially, we are now fifth economy. We are becoming stronger day by day. Others are going down. Graph is going down. Our economical graph is going up. I think the projection is that in all likelihood, India will be the fourth largest economy in the world by July 2024. And third largest, of course, by 2030. But by 2024, July itself, we would have overtaken Germany, which is also undergoing a huge recession. Absolutely true. Right, that's just about it. Thank you so much, sir. शीर्षद साहब, बड़े दिनों के बाद आपको देखने का मौका मिला, आपके साथ बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. राधे राधे. नमस्कार सर. Thank you. Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you. Right, at the moment with us, our very dear old friend, Mr. Nandakumar Pawar, the green warrior, the warrior for wetlands and for mangroves and fishermen. Nandakumar Pawar sahab, namaskar. Namaskar sir, namaskar. How are you, sir? How are you? How are you?
I'm good, sir. I'm very sorry to say that 2 episodes back to back I missed because of my busy schedule. Yes, You can understand. I can understand. So, But happy Janmashtami, sir. Same to you, sir. Same to Happy you. Janmashtami to all the fisherfolk also. I hope they have a good Janmashtami. I can only hope so, sir. So, sir, क्या हुआ फिर उसके आगे? Because all the from whatever I know, now even more fishing areas have been destroyed. The supply of fish to Bombay has decreased to such an extent that now we are not even getting proper fish. Is that correct? Absolutely correct. Because I had just gone to, I'll tell you where I had gone. I had just gone to the Warsaw market just the other day, and I talked to all those retail shops. You know, there's that small little fish market over there. Yeah. जैसे वो जो 7 बंगलोज को जाते हैं वर्सोवा मार्केट Yes, जो है वहाँ yes. पे, Absolutely. तो वो बोल रहे थे कि भाई सर, I can't even tell you the kind of prices that they are charging for simple pomfret and for roe and for others. I mean, it's touching, it's shot the moon. What is going on, sir? Nandakumar Pawar, sir. See, basically what happens as far as fishing thing is concerned, there is the overfishing is happening in the deep sea area. Yes. And the various nets and various techniques are being used, especially the bottom trawling and purchase in the LED system, and huge nets are being used. The so-called drag nets. Yes. Yes, it's very dangerous, sir. And it completely wiped out the bottom of the sea. Yes. And many times, even the small fishes, juvenile, are just born, are being caught. And you see, for example, yesterday itself, the government of Maharashtra have declared pomfret as a state fish. Why? Because it's getting extinct. Earlier the Maharashtra, particularly the Palghar, Satpati, all those areas very rich in pomfret catch. Now it has been completely declined. Now time has come to give protection to the pomfret and see to it that proper measures are being undertaken to increase their numbers. There are various rules need to be bring into the practice, and they should be implemented seriously so that their growth and their numbers can be increased, and that will be benefit general people and the fishing community. But is that so ironical? Is that a joke? Okay, matlab, as soon as the supply of pomfret declines, the Maharashtra government declares it the state fish, pomfret, because you can't find the white pomfret, the normal pomfret that we get. What we get is that black pomfret now. That is there in the market. जो original pomfret आया करती थी white वाली, वो तो आती नहीं है सर आजकल. नंदकुमार पवार साहब. So this is the way our government and authority works. The fishery department is supposed to be the guardian of the fishing community. What they are doing about it? Have they any data with regards to the small scale fishermen? No. Is there mapping has been done as to assess the number of fishermen are deprived because of the project and the pollution in the creek and overfishing? No. They don't have even biology, marine scientists to assess the damage has been done because of the project underneath the bottom of the sea. The entire area has been silted badly because of the various projects that is implemented on the coast. If you see, there are various projects like MTHL or JNPT projects, huge excavation and channel deepening and widening happening on regular basis. The silt which generate in the process are getting deposited. Nobody bothers. There is no condition for the fish to come into the creek area from the sea. Absolutely. And already in the sea there are extensive fishing is happening. Fish are no place. They are either killed or caught in the deep sea, and juveniles are not been allowed to come in because they are also caught at the same time. And they die. And it's a really waste of fish stock actually. Yes. Government has to be very serious about that. It's like shark fishing. By the way, this is for our viewers. You know the number of sharks all over the oceans has declined so rapidly, yes, essentially because of those drag nets. And what they do, yeah, by the way, is they just cut off the fin of the shark, they keep the fin, exactly, and throw the rest of the shark into the sea, and the shark dies. That's what happens. I mean, it's so awful. तो सर ये नंदकुमार पवार साहब ये जरा बताएं थोड़ा सा, अगर मराठी और हिंदी में भी अगर बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा. आप मुझे ये बताइए, जो जापानीज ट्रॉलर थे और ये मल्टीनेशनल के जितने ट्रॉलर हैं, वो जो ड्रैगनेट वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चला था. तो भारत सरकार का उसमें क्या रवैया रहा है? क्या हमारा कोस्ट गार्ड, हमारी इंडियन नेवी, क्या हमारे मछुआरों की इसमें मदद कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि हमारे मतलब वाटर्स में भी आकर के ये लोग फिशिंग कर रहे हैं, स्पेशली
देखिए साहब, हम लोगों ने तो अभी फिशिंग दोबारा शुरू करी है ना रक्षाबंधन के बाद। उसके पहले तो हम मतलब ये श्रावण के वक्त तो हम लोग जाते ही नहीं है बाहर, हमारी बोट जाती नहीं है। बिल्कुल जी, तो बताएं सर, क्या भारत सरकार ने कुछ बात करी है इसमें? हाँ, 2 महीना बैन तो रहता ही है, फ्रॉम जून टू 31 जुलाई, 2 मंथ्स। तो सरकार तो गंभीर है इसके विषय में, लेकिन ये इश्यूज तो होते रहते डीप सी में, बेसिकली स्पेशली बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल। तो हाँ, इंटरनेशनल जो वाटर है उसके ऊपर मतलब कई पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या श्रीलंकन हो, इश्यूज हम देखते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ज्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा फिश स्टॉक जो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है उसके ऊपर अमल अगर सरकार लाएगी तो उसका फायदा हमें होगा। द ग्रेटेस्ट पवार साहब, ये भी अपने बार बार आपने मुद्दा उठा लिया, और हमने भी जितने मछुआरों वर्षों वगैरह में हम लोग उनके साथ प्रोग्राम्स किए थे। The untreated sewage water going in is destroying the industrial affluence, is destroying all the sea breeding that is happening, fish breeding that is happening near the shores. So what, I mean, are you doing, as you have been representing the fishermen for a long time, taking up in environmental issues, is the government thinking about it? Because हमने जितने मछुआरों के साथ काम किया, उनके बोट में भी गए, because no fishes near the shores, no fishes at all. You have to go right into, you can say, across the international border sometime, and बेचारे हमारे बहुत सारे मछुआरों को ना कभी पाकिस्तानी, कभी श्रीलंका पकड़ के लेके गए। Now, what is the solution for that? Industrial effluents into the seas, untreated sewage into the seas. What, as you said, creeks में तो मिलता ही नहीं है fish. What is the solution? Because we are moving towards an ecological disaster. अभी ये फोटो आप जो देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ओके, ये एक वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है। Can we have it on full frame please? ये जरा दिखाएं, ये full frame पे दिखाएं। इसके पहले वाला जो है। जी हाँ सर, बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप प्लीज बोलिए। हाँ, ये तो आप थे वहां पे डिस्कशन में थे। उसके पहले जो दिखाइए जी, उसके पहले जो था वो दिखा दीजिए जी। ये जी JNPT का जी। तो ये सर, दिस इज द पोर्ट, JNPT पोर्ट, ओके जी। नाउ यू कैन सी आई वेंट टू द पोर्ट जस्ट 2 days back to see assess the situation on the ground. जी। JNPA port has been set up into the main estuaries of Khane Creek जी, at the mouth of the Arabian Sea. Almost 550 hectares. You see the cranes in the picture. Those cranes have been set up on the fishing area. That is almost 550 hectares of fishing area has been landfilled by the JNPT. And the channel you see in the video, that channel is supposed to be 1500 meter wide, 10 meter deep. जी। It has been reduced to merely 100 meters. The same channel, I'm standing here. Yeah. It has been reduced to 1500 meters to only 100 meters. जी। Okay. And almost 94% of the mouth has been blocked because of the project. Yeah, we can and see you that. see in this particular picture, Yes. you see the boats on the dry mud flat. This particular area, which is Gavan village at Ulwe, which is 10 kilometers away from the JNPT port, and you see the boats are lying on the dry mud flat. Okay, this is the impact of JNPT port. The entire area has been silted badly because JNPT keeps on excavating, deepening the channel to facilitate the smooth navigation of the big ship that's supposed to be anchored in the port. Okay, see this particular picture. Yes. The entire area has been silted badly. The boats are lying on the dry mud flat. Yes, we can see that. This area 10 kilometers away from that port itself, and this particular area used to be deep during low tide up to 5 to 6 feet. Now during high tide, it's hardly 3 feet of water. You can walk through that area. So it's a complete destruction of area. And why has that happened, sir? Is it because of JNPT or what? It's basically because of JNPT. Because as I mentioned, the JNPT keeps excavating, deepening, widening the channel. Okay, to make ways, safe ways for the navigation of the big ship to be anchored, to be able to anchor in the port area. And that process, the huge amount of silt getting generated, and all those silt getting deposited on the fishing area, the breeding area, and the
fish food underneath the water. लेकिन सर तो यहाँ पे this एक is चीज बताएं नंद कुमार पवार साहब, Yeah. अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, जो जेएनपीटी का जो एरिया है, वहां से पोर्ट हटा रहे हैं और प्लान ये है कि आगे जाके लेके जाएंगे उसको, ये पोर्ट ही खत्म होने वाला है, सुनने में ये है। इज दैट ट्रू? सर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया, क्योंकि जेएनपीटी का या पोर्ट का इतिहास ये रहा है कि आपको पता होगा कि जेएनपीटी वाज अर्लियर ऑपरेशनल एट बॉम्बे पोर्ट एट मुंबई. यस. That entire port had been silted because of its operations. Yes. It's no longer operational state now. It's not feasible to run it now. Yes. Not feasible to run it, not feasible to operate it. Now they have shifted their goal to Nhava Sheva, that is Yes. now Mumbai. Yes. And you see the current condition of this port, it has been silted completely. Okay. तो मतलब सबका Now सत्यानाश the- करके अभी आगे निकल जाएंगे और वहां का सत्यानाश करेंगे. Exactly. Now they are shifting towards Vadwan. Oh God. This won't be feasible to operate for longer period of time. But why is that? Because But why is that? Just correct me if I'm wrong. Sorry, I'm taking so No, no. long in this. Yeah. Because all the channels are supposed to be dredged properly. Dredging has to take place so that all the big ships can come in. They can dock on the port side. Otherwise you have a major problem. Exactly the kind of problem that all the ships are facing right now. So which means very shortly JNPT area में जो shipping traffic है वो पूरा बंद हो जाएगा. कहने का मतलब ये हुआ. नंद कुमार पवार साहब. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी ये सिचुएशन है कि सिल्ट इतना जमा हो रहा है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग हाउ द जेएनपीटी पोर्ट हैज चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया. ओके, डाउनस्ट्रीम देयर आर 200 square kilometer of fishing area. Upstream there are 200 square kilometer of area has been silted badly. They are not getting any fish. And it is said that whatever you sow, so shall you be rewarded. हम जो बोएंगे वही उगेगा. Now how the landscape has changed, how the ecology has changed. The JNPT, because of their operation, because of the siltation which is generated by the JNPT Port Authority, there are 218 hectares of area they have to hand it over it to the mangrove cell, the forest department, because this area has been transformed into the thick mangrove cover because of the siltation. 218 hectares of mangrove area they have to hand it over to forest department, which was happened recently. Gee. But that is because of you. And it, That's essentially because of you. Man, that's essentially because of all the agitation you have done, right? Have they handed over, sir? They have. yes. That's been handed over. That's been handed over. That's a Yeah, great victory, by the way, for fantastic. Mr. Nandakumar Pawar and all the environment activists. Fantastic. No, sir. Let me tell you how it is disastrous for the environment and the ecology. The area, essentially fishing area, as a water body, Yes. it has been silted because of the silt which generated in the process of JNPT port operation. Yes. And slowly, gradually, entire fishing area has been transformed into the mangrove, Yes. and there are no water now. Okay, since there is no water, there are no fish. There is no place for migratory birds. There is no place for So it will weather. come. If the area is left alone, you'll have to wait for another 3 or 4 or 5 years. It will be back. Yes. ऐसी बात नहीं है, 3, 4, 5 साल लगेंगे, but it's a major victory for you. ऐसी कोई बात नहीं है. सेलिब्रेट करो सर, कभी कभी तो सेलिब्रेट करो. बहुत मुश्किल से कुछ ना कुछ मिलता है. और JNPT No, to sir, hand over 218 hectares, my No, God. sir, we should thank Stalin sir for this, because he has done lot of efforts Yes, I know. continuously. You know, he has been fighting Fantastic. many court battles. जी. And for सर him वही it's बात very serious. नंद कुमार पवार साहब, ये तो आपने इस जगह की बात करी है. इवन इन मुंबई, फॉर एग्जांपल इन वर्ली, their entire intertidal ecosystem has been destroyed completely just because of the coastal road. Coastal road की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पे खराब हो गया. सारे फिशर फोक जो वहाँ पर थे सब चले गए. वर्ली कोलीवाड़ा खत्म हो गया है. सो पहले वहाँ पे आपके पास पूरे प्रॉन्स आया करते थे, वहीं से मिला करते थे, क्रैब्स होते थे, प्रॉन्स होते थे, बाकी जो क्या वो लेडी फिश होती है वो मिला करती थी, वो जो रेड स्नैपर है वो मिला करता था. आजकल वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं मिलता. जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे आपको, वर्सोवा पे जेटी पे पहले जो वहाँ के पुराने फिशरमैन हैं हम लोगों को बताया उन्होंने कि भाई अर्लियर वी कुड फिश राइट हियर, और आज वहाँ पर सर पानी इतना गंदा है. There is that oil slick always floating on top of it. There is a smell of chemicals. 3 या 4 इंडस्ट्रियल एरियाज का पूरा जो इंडस्ट्रियल एफल्जेंट्स हैं सारे के सारे इसी एरिया में आते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में, क्या मतलब सरकार
को अवगत कराया गया है? क्या हुआ है, मतलब हैज एनीथिंग बीन डन सर? Sir, see, we are keep writing continuously. We go to the court on regular basis, but Ji. there is nothing is changed. Because I'll give you one example how the JNPT port have been got clearances. There is a government agency called CWPRS, that is Central Power and Central Power and Research Institute Station rather, which keep giving clearances to the JNPT. जी And they always keep on maintaining that the project won't impact on the tidal currents. But what is happening on the ground, they never assess how the silt has damaged complete ecology, how the silt has been covered the fishing area, the spawning and breeding area. You will see only silt underneath. And when the entire area is destroyed, their food is destroyed, their habitat is destroyed, why fish would come to that area? The rocky terrain is supposed to be their habitat for the crustaceans or the shell varieties of fish like crabs, prawns, tiger prawns, lobsters, eels. All these fish we used to get in abundance in that particular area. Now the entire area has been silted badly because of the JNPT port. Also the mouth of the creek has been narrowed by 1500 meters to 100 meters. The complete area has been lost. The reach fishing area earlier has been completely lost because of the port. And authorities like CWPRS, CMFRI or NIO, IIT Bombay, MPCB, they are the government agencies. They have to take cognizance of the issue. They should undertake the ecological study of that area. The biological study of the area should be undertaken to assess the damage has been done by the project. But nobody bothers about what's happening. Nanda Kumar Pawar Sahab, you know, talking about fishes, I remember when I was very small, that Mithi River was flowing so beautifully and there were fishing nets there and, you know, people used to catch fishes from Mithi River. Now, seeing Mithi River, you cannot imagine that once upon a time there were fishes out there and the locals were catching fish. Now, that changed. I said, Sarkar ka kaam hai, various agencies ka kaam hai, what are they doing? Airport aa gaya, airport ka extension वहाँ पर हो गए, फिर जो oil वाले, you know, this oil जो duplicate करने वाले लोग आए, they came to the banks of the Mithi River and the oil started going in, effluent started going in. I mean, it has destroyed the entire ecosystem out there. Now, again, when you come back to Thane Creek, you environmentalists have been fighting. Thane Creek turned into wasteland. That is when continuously आपका एक संघर्ष है कि why is this creek turned into wasteland and what they are doing. And you environmentalists have come together and you said Swachh Bharat सिर्फ streets में नहीं होना चाहिए. Swachh Bharat should, the government should not stop Swachh Bharat only to the streets of the country, but it should take it to the water bodies. आप स्वच्छ भारत को वाटर बॉडीज तक लेके जाओ ना. यहाँ पर आप वाटर बॉडीज के लिए, I mean, स्वच्छ भारत के लिए हेल्पलाइन है, टोल लाइन है, हर प्रकार के लाइन है. मगर जो वेस्टलैंड, क्रीक को वेस्टलैंड बना रहे, वाटर बॉडीज को डंप करके डेब्री से पूरा खत्म कर रहे, उसके लिए कोई कॉल सेंटर या टोल नंबर या इस प्रकार से स्वच्छ फोटो निकाल के भेजो, तुरंत एक्शन. You know, let me tell you, on the streets, the Swachh Bharat campaign has been successful to a certain extent because streets है, roads है, building के सामने है, घर के सामने कचरा आप फोटो निकाल के भेजो, there is immediate action. But you environmentalists want the same thing where water bodies are destroyed, creeks are destroyed, and all these. तो वहां पर क्यों नहीं हो रहा सर? नंद कुमार पवार साहब, स्वच्छ भारत. सर यही तो बात है ना कि हम बड़े बड़े भाषण देते, बड़े बड़े पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलते हैं कि स्वच्छ भारत या जो भी नया प्रोजेक्ट हम अनाउंस करते, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कितना होता है इसका असेसमेंट कभी कोई करता नहीं, ना कोई देता है. अभी आपको मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि थाने क्रीक के बारे में, जो कि 19 जुलाई में जो बारिश ज़्यादा हुआ था, ओके, तो 19 जुलाई से लेके मतलब 28-30 जुलाई तक थाने क्रीक के बारे में हमने सवाल उठाए थे, क्योंकि वहाँ पे जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है DPS में, बांडू पंपिंग स्टेशन, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन चालू है, अभी मेंटेनेंस चालू है. तो उसमें से जो टॉक्सिक सिल्ट जनरेट हुआ था, जो निकला था, वो सिल्ट कहाँ पर डंप किया गया जी. हमें कहीं जानकारियां मिली कि ये सब टॉक्सिक
सीवेज डंप जो भी निकला उसमें से वेस्ट, वो सब रातों के अंधेरे में हाई टाइड के टाइम थाने क्रीक में बहाया गया। ओके, मैं उनको लगातार मॉनिटर कर रहा था कि कहाँ पर है, लेकिन आखिर एक दिन मैंने देखा कि जो पाइप अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है थाने क्रीक के आउटलेट में, वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारा सील्ड पूरा जमा हुआ है। लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सब बातें होती थी रात के अंधेरे में, और कहीं लाखों या करोड़ों रुपया इसमें लोगों ने बनाया। क्योंकि ये सील्ड अगर आप साइंटिफिकली डंप करोगे या फिर ट्रीटमेंट करके ये करोगे, दैट विल कॉस्ट यू लैक्स ऑफ रुपीज, crores ऑफ रुपीज रादर। तो ये सब होता है। अभी थाने क्रीक में पोल्यूशन है, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है सर। But Thane Creek is one of the most polluted right now. It is one of the most beautiful places at one time. Exactly, sir. We have checked Thane Creek pollution actually. We take water sample from different locations. नंद कुमार पवार साहब, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ आपको। आज फेस्टिवल का दिन है सर। सर, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। सबसे खूबसूरत है महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो। यहाँ से लेके कोंकण तक, गोवा तक अगर आप जाएं तो ऐसी सुंदरता, ऐसी खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य और कहीं नहीं है। इसको हम लोग क्यों खत्म करना चाहते हैं? मतलब क्या मानसिकता हो सकती है? Why would people want to destroy this? It's one of the most beautiful places on earth. Why would they want to do this? Pawar sir. So see, there are handful people, there are corporates, there are limited people, very handful people want to destroy it, and masses don't get any benefit out of the projects which are coming into the. Yes. Okay, so on just 19-20th August, I went to Delhi. I was called specially to participate in E20 summit. Yes. It's a people summit. Now I was specially invited. They hired air ticket for me, and I traveled because see on 9th and 10th it's supposed to be G20 summit is happening in Delhi. We also met at Delhi, Surjit Singh Bhavan, and there were over 700 activists, environmentalists, farmers were gathered in the campus all over the country, including Jairam Rameshji, Vrunda Karat, Meda Patkar, and so many other reputed even social activists. The reason behind that, the G20 summit which is happening, and what should be the role of the people? हमारा जो हक है जल, जंगल और जमीन पे, उसको बरकरार रखना जरूरी है। क्योंकि ये समिट जो हो रहा है, ये समिट किस लिए हो रहा है? दिस इज रिच कंट्रीज समिट, दिस इज नॉट पुअर, एंड we are happy for that since we are leading it. Okay, the purpose of the summit to invite more foreign investment in our country. Okay, fair enough, we are happy, but what about the stakeholders? What are their rights? Absolutely, I agree with you. Now, for example, there are thousands of hectares of fishing area we have sacrificed. Yes. For the development of the nation. There are various projects are coming up by the CIDCO, Reliance, JNPT, ONGC, national, international projects. But where we are in the projects, we are nowhere. We have lost employment, we have lost our traditional livelihood. Now the entire area is getting submerged. And whatever is left is also going to go. Exactly. And I went to Delhi specially to talk about the regarding the funding agencies, which is international funding agencies, especially the World Bank, WTO. They are not concerned about the environment, sir. Yeah. So these funding agencies are granting funds to various corporates for their own development. Yes. What are the local stakeholders? Okay. And we want to draw their attention, we want to drag their attention to the fact that whatever condition the loan has been granted to the project proponent, it's their duty to ensure that the condition on which the loan has been granted are duly complied with or not by the project proponent. The basic condition obviously is the protection of environment. There should not be any degradation of environment. There should not be any human rights violations should happen. And exactly there is a huge amount of degradation of environment is happening. There is huge amount of degradation of
human rights are happening in Udan Taluka. There is displacement happening. Nobody bothers. And the ADB published their report. Okay, they're saying that this project won't impact the recent project where they have funded 131 million US dollar for JNPA for fourth container terminal. Okay, so they are saying this project won't impact environment and the local community. Yes, otherwise the project will not be given. Otherwise the project will not get the financing. Absolutely true. And it's very disturbing, sir. They have categorized environment as a B and categorize indigenous communities right at the C. Yes. I mean, there is no any significance as far as environment is concerned and local rights. So which means you have to organize. नंद कुमार पवार साहब, संगठित करना पड़ेगा सब लोगों को और अपने पर्यावरण को, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए हम सबको साथ में आना पड़ेगा. Next time you come on the show. और सब 35 लेक्स अभी ठाणे में है कि नहीं जो इनके 35 लेक्स जो था 35 लेक्स में 15 शायद having excess toxins. But our question is whether 35 lakes are there. नहीं तो उसको बंद करके कवर करके वेस्टलैंड बना दिया ऑलरेडी. सर वो तो नजारा तो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा. खाली मासुंदा लेक intact as of now because that is attraction is situated in the heart. What about the rest? बाकी 34. It's very sad status. कचरा जमा है, water stagnant है. Sir, the next time you are here, we are going to talk about the Tirupati Balaji temple. Sure, sir. At the NMMC, at Navi Mumbai, which is coming up, over mangroves. Yeah. You have played a huge role in that. We were not able to get you. We had our old friend Mr. BNK Kumar Saab with us. I hope you'll be able to give a proper perspective on what is going on. Thank you very much, Nandakumar Pawar Saab, and really and truly proud of you. We are always with you. The whole of Maharashtra is with you. The whole country is with you. You must continue to do what you're doing, and we'll be with you. We need to protect our fisherfolk. हमारे मछुआरों को हमें बचाना है, और मछुआरे तभी बच सकते हैं अगर जहाँ पर वो मछली पकड़ते हैं वो इलाके ठीक ठाक रहें. तो अगर वो इलाके खत्म हो जाएंगे तो मछुआरे भी खत्म हो जाएंगे. राइट सर, थैंक यू वेरी मच और हैप्पी जन्माष्टमी अगेन. राधे 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 राधे. थैंक यू सर. नमस्ते सर. नमस्कार. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम सर. That's a very brave soul. That's a very brave man. And look at the and way. All the environmentalists are really fighting a battle out there because it's a very thankless job. Whatever you do, people say we have to be with development. हमको ये चाहिए. You need to cover these lakes and make buildings out there. Where is the place to stay? ये कहाँ जाएंगे? It's very shocking that 35 lakes के बारे में बात करें, एक ही लेक एक लेक बची है. So जैसे दिल्ली में कचरे से भरा हुआ. जैसे दिल्ली में एक जमाने में एक जगह होती थी झील, उसको झील कहा जाता था. डीटीसी की जो बस होती थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बस थी, मुझे अभी तक याद है उसका नंबर भी शायद 202 हुआ करता था. झील लिखा होता था उस पर. आज की तारीख में उस झील के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर. खत्म है झील है ही नहीं. इसी तरह बतकल लेक है, वो भी खत्म हो गई. मतलब ये क्या कर रहे हैं? सूरज कुंड अभी तक बचा हुआ है बिकॉज इट्स अ हेरिटेज साइट, अभी तक बचा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी नजर है, सुनने में आया है. Right, and this fight will continue. I hope it's not a losing battle. It's a thankless job, and we need to applaud our environmentalists for what they're doing. But the fact is, they also are to blame. They must also try to tell people how this is for your benefit. We are not just fighting for the environment; we are fighting for you. At the end of the day, जब बाढ़ आएगी, तो बाढ़ में जो बाढ़ का पानी है वो ये नहीं देखेगा कि कौन मर्सिडीज में है, कौन रोल्स रॉयस में है, कौन बेंटली में है और कौन मारुति में है, और कौन ऑटो में. वो सर राइट टू इक्वालिटी, एक्चुअल इक्वलाइजेशन हम लोगों ने देखी है 26 जुलाई को, यहीं पर 26 जुलाई 2005 को हम लोगों ने मुंबई शहर में देखी है, जहां पर भले मर्सिडीज हो आपके पास या जैगवार हो या बेंटली हो, सब सीधा ऊपर गए. देखा हमने और सबको चलते हुए देखा है. मुंबई शहर के गंदे पानी में सबको चलते हुए देखा. Right, another moment with us from the Shiv Sena, the official Shiv Sena, we have Mr. Krishna Hegde, our old friend. Krishna Hegde Saab, namaskar. Mr. Hegde, how are you, sir? Can't hear. Mr. Hegde can't hear us. Can somebody tell Mr. Hegde that he's on air?
Mr. Hegde, how are you, sir? Will someone tell Mr. Hegde that he was on air? I think he just switched off his phone. Or has he switched off his camera? I'm not sure. Is Mr. Hegde with us? Will somebody talk to me, please? I'm not sure what's going on outside. There seems to be a lot of confusion. Even as I have just been told Mr. Hegde is not able to connect. I was just told that Mr. Hegde is connected. And we were trying to, conclude our discussion with Mr. Nandakumar Pawar. Very strange. I mean, maybe it is the effect of Janmashtami. Maybe everybody wants to go home. Pradeep ji? मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्माष्टमी की वजह से हर एक कोई घर जाना चाहता है. राधे राधे. लेकिन सीधा नहीं जाते. उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस and Ajit Pawar are not going to come back to power. That is what Uddhav Thackeray ji is saying. Now ye kitna, how seriously you need to take it, because he says the vote share is on our side, Sharad Pawar is with us, the Congress is with us, the old MVA which is now Indi is going to be challenged. So when Uddhav Thackeray ji says that Eknath Shinde will never, and his entire team will never be elected again, he says it's a serious charge. That's right. I think we've got Mr. Hegde with us. I'm not sure. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much. Mr. Hegde, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Wonderful. Wonderful to have you back, sir, on the show. Thank you so much. You're looking very handsome as usual. How are you, sir? Not as handsome as सर usual. आपको जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं. सर आप मजाक अच्छा कर लेते हैं. मतलब मैं तो आप बाबा लग रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास. अभी बहुत जल्दी मैं गेरुए वस्त्र पहनने वाला हूँ, तिलक लगा के, तिलकधारी, सबको आशीर्वाद देने वाला हूँ. सर, so congratulations. Finally the GR is coming out as far as the Maratha reservation is concerned. I think within 4 days GR will be issued, and the promise made to the Marathas will be kept, which is really and truly wonderful. Would your thoughts, sir, on the subject? Rajiv ji, on Saturday I was with Honorable CM Saab, and he was also discussing that everyone was, that he called several of his ministers to Varsha. Government is very serious about it. Only thing we need to know that one, that it stands in the Supreme Court. There are other people who should not go and create obstacles. Whatever we do, we have to do in a very solid manner, Yes. foolproof manner. Third, at the same time, we have to see that whatever benefits we give the Maratha brothers and sisters, the OBCs also should be accommodated. All sections of society should be accommodated, and no one should feel left out of the benefits. So this is the priority of the government under the leadership of Eknath Shinde ji, and we are committed to giving more benefits, whether it's job reservations, whether it is employment, whether it is other facilities, whether it is admission. We are committed to giving benefits to our Maratha brothers and sisters. Hegde sahab, Uddhav Thackeray ji, Sanjay Raut and the entire Aditya Thackeray, unka कहना है कि even if Mr. Modi were to come with Chandrayaan 3 in Maharashtra, nothing is going to happen. Eknath Shinde, Dev Fadnavis and Ajit Pawar are going to lose the elections badly. It is the MVA and India that is going to win. That is what Uddhav Thackeray, and he goes on to say that, who's General Dyer? You come out clean. Who ordered the Lathicharge on the Marathas? Why all the three not disclosing the very fact? Why are you trying to put the police and administration into problem, saying they have done it on their own? You have to come out in the open and tell us who was General Dyer. That is what Sanjay Raut was saying. Tell us who's General Dyer. Who's General Dyer, sir? Hegde sir. Only he should know who is General Dyer, because he knows everything, and everything he's been saying for last 1.5 years. Everything is happening the opposite. And everyone is aware that in police administration, no one gives, direction for Lathicharge, that too on innocent
people who are sitting in agitation, that too on a fast. Even earlier, the Maratha brothers and sisters had so many peaceful rallies which are not attended by thousands but lakhs of people. Yes. And all the morchas have been peaceful. So there is no need to take any strong action. However, saying that whoever the police personnel or officers who have been instrumental in this operation have either been suspended, transferred, or sent on a long leave. So the government has taken stern action on these officers as well. Second thing is, we as a government are committed to the Marathas. Same way we are committed to the OBC also. Same way we are committed to the entire crores of people who live in Maharashtra. And we want that this government which works, this triple engine Sarkar, which is under the leadership of Eknathshinde ji and Devendra Fadnavis ji and Ajit Dada Pawar, who's working 24 hours for the people of Maharashtra, Yes. give all the benefits to the people of Maharashtra, whether it is, for the farmers, where we are giving compensation, whether there is a drought, whether there is a flood, whether there is unseasonal rains, whether it is, infrastructure projects, whether it is irrigation projects, whether it is whatever, generating employment, whether it is bringing new industries into Maharashtra, whether it is giving a fillip to industrial sectors, everywhere the government is. But Hegde Sahab, the fact is the last time when the case came up in the Supreme Court, the Supreme Court rejected the reservations for the Marathas. That was given by the Devendra Fadnavis government. At the time when the case came up in the Supreme Court, Mr. Uddhav Thackeray was the Chief Minister. However, what I am surprised about, and we had this discussion earlier with the BJP spokesperson also, sir, in Tamil Nadu, the reservation is about 69%. There are only 31% general seats. 69% reservation is in Tamil Nadu. In Andhra Pradesh, from whatever I recall, it's over 70%. And that has been there since the time of Mr. Narasimha Rao, when he was the Chief Minister of Andhra Pradesh. Now, my point is, that's a precedent. All that needs to be done is for a proper justification with empirical data to be provided to the Supreme Court as to why Marathas deserve reservations. That's it. So, there should not be any difficulty in that for the government. Hegde sir. Yeah, so that is why we basically asked for a few more days, but Maratha leader Manoj Jarange Patil gave us only 4 days. However, we are trying to compile whatever data we can in next 4 days and put forward a strong case before the Supreme Court, and also within our legislature where we can remove a GR and see that whatever their demands are there, that is fulfilled. Secondly, as you said very rightly, that this issue was rejected by the Honorable Supreme Court during the leadership and the Chief Ministership of Uddhav Thackeray ji. Yes. And Ashok Rao Chavan ji was at that time the president of the committee. And both these leaders went there to Jalna and were trying to mislead the Marathas and mislead the people of Maharashtra on this issue and try to create a law and order situation. Similarly, other leaders also went there and people were more bothered about their political mileage than actually about the health of Manoj Jarange Patil. So basically, whoever our people have gone, our first, this is that Manoj Patil's health is good. He remains stable. His parameters, whether it is liver, whether it's kidney, whether his vital organs are all working. And we are, responsible for him. We are a responsible government, unlike those who came there and spoke. Possibly the person who mentioned General Dyer does not even know what Jallianwala Bagh was. The comparison which he gave is so unfortunate.
that he is bringing out a black day in, the history of India, where thousands and thousands of people were shot, Sikhs were shot, Indians were shot by General Dyer, and that too in a mass massacre. So to mislead the people to such a level, it itself shows what kind of mentality they are trying to project and what kind of issues they are trying to bring up before society and how they are trying to divide society. Hegde sir, there was a flip-flop from all leaders. All political leaders were telling something, and then Vijay Vidyanathan for one instance, 2 days back he said, give it out of the OBC quota, give them out of the OBC quota. And second day he said, no, it's not possible. There's a flip-flop again. Raj Thackeray ji went there, he says that all politicians are misleading and nobody is giving in fact he was trying to say that's not possible at all. Raj Thackeray ji was very blunt, he said, I can't understand how because Supreme Court has already given its ruling on this particular aspect, what more can have, and who are the people who are instigating you and bringing out that, showing you a possibility these things are going to happen. Now, when Vidya Tiwar said, Chhagan Bhujbal ji, the mass leader of the OBC Samaj, he says, no, you can't give it out of the OBC quota, it's impossible. In fact, today, the Mahasangh leader of OBC Samaj, he said very clearly, Taiwadi ji said that impossible. If there is any attempt to shake the OBC quota, there will be state-wise agitation. Now, how do you come out of this entire, flip-flops, misguidance, various leaders talking differently? You think Shinde Sahab, Dev Fadnavis ji and Ajit Pawar can probably work out a solution? Do you think that, Hegde Sahab? I must tell you very clearly here that there has been, attempt by some of these leaders to create a divide between the Marathas and the OBC. On one side, they are saying sometimes that reservation should be given from whatever reservation the OBC are holding, and one side they are saying the other thing. So they are very double-faced. Secondly, what Manoj Jarange Patil is talking about is not the issue which is in Supreme Court. He is talking about reservation out of Supreme Court. Whether it is, he is speaking about the Gaikwad Samiti and during the time of Nizam Shahi, where the Marathas were given the darja of Kunbi, and through that they got additional reservation. And this is also mentioned in the Gaikwad Committee report, and he is asking for the implementation of that to go back to the yesteryears and implement the same thing, the benefits which they were having earlier, to give it to them. And the government is also working on the same issues, how to identify Marathas as Kunbis and to give them extra reservation from there. Secondly, also in the EWS category, if you see, most of these government officers, when the Marathas go for jobs or for employment or for admission or for other government and other facilities, the officers also play a different kind of a scenario. What they do is, instead of seeing where the Maratha economically stands, if he is economically backward and if he needs economic support and he is from the economically weaker section, though he is a Maratha, he should be put into the economically weaker section category. Yes. But he is deliberately put in the open category, and therefore it takes away a lot of his benefits, and जैसे बोलते हैं कि उनका हक छीन लेते हैं. Because of this, the open category gets filled up faster, and where the Marathas get the reservation, and the EWS category, if a study is done on the economic stature of the family, and he is initially put into the EWS category, where the quota is for the EWS, 7 or 8% additional Marathas will get the same benefits as they can derive the same from the EWS category. So this is not being done,
and the government is working towards this as well, and we are very confident. Our Honorable Chief Minister himself is a Maratha, and we are very confident that we will give all the required. In any event, as far as benefits. Hegde Saab, in any event, as far as educational institutions in Maharashtra are concerned, there is already 62% reservation, including 10% for economically weaker sections, EWS category that you mentioned just now. And I don't know why this thing is happening. Why do you think these officers behave in this particular manner? Because rightfully speaking, half the problem will be solved if you behave in a very rational and sympathetic manner. Exactly, see, but all this requires study, and it requires Yes. some hard work, and it also requires, you need to have a research on such things, which they don't want to do. They take the easier way out, unfortunately. मतलब मराठा That's तो how it सीधा happens. सीधा जनरल कैटेगरी में डाल दो चलो. Yes. Direct. That is what is happening, I think, Yes, most of the time. which is terrible, which is absolutely terrible. Yeah, yeah. But do you think you'll be able to solve the problem? Do you think now the problem will be solved? Because at the moment what is happening is only the Kunbis will get that certification because of this GR. Now we are actually looking at 96 different categories in among Marathas, 96 different castes. So what about the rest? Is there going to be a problem there, or do you think an overall general category reservation will come out? See, even the last time when we went to, when our government was there, we stood ground in the High Court, and we stood ground also in the Supreme Court. When it came, when the MVA government came, they could not hold their stand in the Supreme Court because they did not give the facts, they did not give the figures, and they Yes. did not represent the case Yes. strongly. And somewhere, because of their failure, our government is facing this issue. However, we are very confident that under the leadership of Eknathshinde ji, we will solve this issue to our best and give all the, respect, all the opportunities, and all the reservation meant for the Marathas to them, because we are a party which works for the people. We are an alliance which works for the people, and we want them to get justice. So that is the whole, crux of the matter. We will do our best to see that they are not deprived of their rights. Pradeep ji. Hegde Sahab, again the Uddhav Thackeray Sena has been complaining that this particular government has been very, very partial while allocating funds. Now they are saying we will even go to the courts if things are not improving. Well, आप जितने भी funds there, it is always given to eknathshinde good, Fadnavis good, BJP and Ajit Pawar good. They are taking over all the funds, and there is no funds, development funds been given to Uddhav Sena at all, Uddhav Balasaheb Thackeray Sena. Now this is hampering development. They say already the state is totally back where development is concerned. Nothing, the roads are so bad. In fact, the Manse agitation for Mumbai, Goa shows the very how bad entire things are. They say in Uday Samant's entire where Ratnagiri he is coming from, wherever he is coming from, the entire MIDC 50% have been shut. So how are you going to, once there is no development at all, and then you are being partial about allotment of funds, how are you going to overcome the criticism of Uddhav Balasaheb Thackeray group? Hegde Sahab. See, it's a democracy, and they can say what they want to say and give their views. However, what they have not been able to do they had the government for 15 years, that is the NCP Congress government, and then again the Mahavikas Agadi government. They were not able to fulfill, one road, that is the Mumbai-Goa highway. However, our ministers, our chief ministers are all working on the project, and hopefully by the end of this year, this entire, road will be complete. Moreover, I think one lane is already complete right now for people who are going to Ratnagiri and Konkan during the Ganpati festival. Secondly, the people who are talking about potholes on Mumbai roads, I think they should first look into themselves and see who was ruling BMC since 1985, and where is this collapse of
administration and huge scale corruption which has happened in the BMC. Even in COVID, the CAG has said that there is a 4,500 rupees scam, 4,600 rupees scam, and the total scam the CAG has pointed out is around 12,000 crores during the Uddhav Thackeray's regime. Obviously, they will have to answer all these charges and also face the music. Over that, I must also tell you that the Honorable CM has already allocated close to 4,000 crores for the roads, 450, 500 kilometers of roads in the first stretch and another 400 kilometers of road in the second stretch, which are going to be concretized in the next 2.5 years. And within 2.5, 3 years, Mumbai will have concretized roads. And after that, there will be no complaints of potholes and whatever issues which Mumbaikars faced in the regime of the Uddhav Thackeray-led BMC. Thirdly, talking about allocation of funds, you are aware that such allocation of funds, when the MVA was there, the MVA ministers, the MVA MLAs were getting more funds. The same happened for Aditya Thackeray ji, even in Worli, where if you go and look at Worli, look at the amount of money which is given to that constituency. So, if a constituency needs funds and the people, there is some good project happening there or funds are allocated. Earlier, the same people were saying that, when Ajit Dada was finance minister in the MVA government, they did not get funds. So either they can't say both things, that they be getting funds also and not getting funds also. So similarly, I must say, they are going to keep complaining. But Hegde sahab, Aditya Thackeray said that when Prime Minister reduced the gas prices by 200 rupees, he said 2 India meetings. And look what Mr. Modi, he's got scared of the India meeting and he has reduced the gas prices. Now he says that after third meeting, continuously, you're scared of India, you and the BJP are so much scared of India, now you've changed India to Bharat and you're trying to, why are you so much scared? What happens if the India is... No, first if you take the long form of this I.N.D.I.A, it is Indi Alliance, not India. Indi Alliance. So why should we be scared of Indi Alliance? We don't know whether it is the End Alliance, because after first meeting they said, Lalu Prasad ji said that Rahul Gandhi ji should find himself a bride. Second meeting, between that the AAP and the Congress fought on the Delhi ordinance issue. Then there was a second meeting. Then the Congress and the AAP fought on who will contest the Member of Parliament seats in Delhi. Then the AAP threatened to boycott this India Alliance, say this India Alliance is the End Alliance for us, we are not coming back. Now they came with a third meeting which happened in Mumbai. We thought, chalo, this India Alliance will at least name a Prime Ministerial candidate. That did not happen. We thought they will name at least one convener who will direct the proceedings. That convener's name did not happen. And then they gave 74 coordinators' names after 3 meetings. That I think the secretaries of each party, even if they had sat down, they could have given 5 names of everybody and they could have had 75 coordinators. I don't think it is rocket science to have 75 coordinators. This is, I think, basically a waste of time, a photo op what they did. And for this waste of time, India Alliance, I don't think we are scared. Tomorrow they will say because of this we are reduced 200 rupees from gas cylinders. Luckily they did not say that we have sent the Chandrayaan 3 to the moon because we are scared of them. And today the ISRO is sending, hoping and sending a study on the sun to study the solar movements. They will say we are scared of the fourth India meeting. So these people, I think they are going so fast that they are, I think, deciding for 2029. 2024 is out of their reach. So I wish them the best for 2029.
They're all old colleagues of yours. Some of them are old colleagues of yours, Hegde Saab, so you know Yeah, them but quite they, well. you know that. Yeah, that's So why. that's why I he's saying they're left, planning for going so 2029. fast. Well, which seems I know likely, who they are planning which for. is also quite likely, but one never knows. After all, but they are in the opposition and they will attack you with whatever they've got. But very, very happy Janmashtami to you, No, sir. that is. That, But very happy Janmashtami to you, sir. And I hope thank you, and wish you the same. I hope this Maratha reservation really works out. I hope everything gets settled, because you can't have this kind of a thing in a state like Maharashtra. You can't have this kind of a, where people feel hard done by or exploited or persecuted. I mean, that's not good for a state like ours. This is Rajeevji, if you look at them, I'll tell you, everywhere they are double-faced. Whether it is Jaitapur, they said first we won't allow anything in Jaitapur, then they only gave a letter for Barsu, Yes. and then they said no, we won't allow anything in Barsu. Yes. I can only tell them one thing, please make up your mind. very difficult. अभी Very difficult. 3 मीटिंग As you said, we have to ask the most famous editor in the country, who really is the Dyer he is talking about. Is he talking about some Michael O'Dwyer, or is he talking about Brigadier General Dyer? I'm sure he doesn't even know he was a brigadier at the time when the Jallianwala Bagh took place. I am reasonably certain he doesn't know. I don't think so. Yeah, and it is very tragic that you are, bringing out a black day of the history of India, where thousands get massacred out Yes. of, getting spraying bullets by some Britisher. That was Not sad. the way to talk about your own think we should- countrymen. I don't think that analogy should have been used at all. I don't think anything else would have been fine, but this is not done. But then he has always been like that. He's an old friend, so that's the way he is. Yeah. But Mr. Yeah. Hegde, great pleasure talking to you as always. Thank you so much for joining us, sir. You've joined us after a long, long time, and we are very happy to have you on the show. Thank you so much. Thank you very Now, much. I see your and, friend have a Venksankar very- at MCA most of the time, early mornings around 11 o'clock. So you should also, invite me for breakfast. I can also get to meet him. We were supposed to meet, I think he said, I think tomorrow, So I'll have to just fix up a lunch. Wonderful. Okay. Absolutely wonderful. So are you meeting him for lunch at the MCA or somewhere else? Yeah, tomorrow or day after for sure. I have to coordinate another couple Wonderful. of friends. Wonderful. Right, sir. Thank you so much. Namaskar, sir. And Thank Vande you, Mataram. thank you very much. Vande Mataram. Vande Mataram. Well, it's all right for people to just dismiss the India alliance, but the fact is that too much of a coincidence, don't you think? India, Bharat. Let's ask Hanuman Pawar sahab. Hanuman Pawar sahab कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं. Hanuman Pawar sahab, नमस्कार. नमस्कार, राम राम. जय सिया राम. राम राम सर, राम राम. वंदे मातरम और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. राधे आपको भी, आप राधे. दोनों को भी. राधे आप दोनों को. राधे. तो सर इंडिया ने भारत बनवा ही दिया, आपने मतलब बनवा के ही छोड़ा आपने, मतलब कहने का मतलब ये हुआ इंडिया का आपने भारत बनवा के ही छोड़ा. हनुमंत पवार साहब. तो इंडिया अलायंस जो बन रही है, बन गई है अभी लगभग, तो इसका इतना डर मोदी सरकार को है कि ये देश का नाम बदलने ही चले. मुझे तो इस बात का डर है कि उससे पहले, इंडिया अलायंस बनने के पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी बड़े जोर शोर से निकाली थी. उसको पूरे हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दे दी राहुल गांधी जी को. सब लोग उसमें शामिल हुए बड़े तरीके से. तो मुझे तो लगता है कि ये भारत नाम पे भी पता नहीं, भारत जोड़ो में भारत नाम सबसे बड़ा था, आगे था, तो ये भारत नाम का भी कुछ इधर उधर करके कुछ तो पुराना 3-4 हजार साल, 5,000 साल पहले का कुछ तो नाम ढूंढ के ये वो भी करेंगे कि क्या पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है, इनको किस लिए चुन के दिया था और ये कर क्या रहे हैं. नाम बदलने के लिए तो नहीं चुन के दिया था. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, जिन्होंने आजादी की जंग में लाठियां खाई थी, गोलियां खाई थी अंग्रेजों की, जेल में गए थे, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल जेल में लोग रहे थे. अपना घर परिवार सब नौछावर करके, अपनी पूरी धन दौलत नौछावर करके, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे जो लोग, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन सभा जो थी, संविधान सभा, उसमें बैठे थे. उन सभी तमाम महानुभावों ने
बड़ी चर्चा करके, वाद विवाद करके, बड़े जोर शोर से चर्चा करके, विचार विनिमय करके, सलाह मशवरा करके इंडिया दैट इज भारत, ये नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग शामिल थे, मैं बार बार कहता हूं, ये वो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सहभाग दिया था। उन लोगों ने इंडिया दैट इज भारत ये नाम हमें दिया है। इस नाम पे हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, इस पे हम नौछावर होने को राजी है। ये नाम बदलने का हक इनको किसने दिया? इनके जो ये जिनको मानते थे वो तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, तो ये आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे। इनमें से कुछ तो लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 2014 के बाद ही आजादी मिली है, ऐसा ये सरेआम कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए भी ऐसा कहते हैं कि 2014 को आजादी मिली है, और हम उसका अमृतकाल भी है, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिमागी हालत सरकार चलाने वालों की ठीक है क्या, ये सवाल मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में पैदा हो, ऐसी सिचुएशन ये देश में ला रहे हैं। उसमें से ही एक उदाहरण आपके सामने है, इंडिया दैट इज भारत। इसके ऊपर ये अब बहस कर रहे हैं, न जाने क्या करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जीतेगा इंडिया। पवार साहब, आप जो बोल रहे हैं कि वही सही है। मोदी साहब बोल रहे हैं 2014 से पहले इस देश को विदेश लोग क्या बोलते थे, बोले कि 1 बिलियन भूख मारे मीन्स भूखे लोग ऐसे संबोधित करता था। आज 1 बिलियन बोले कि इंस्पिरेशनल माइंड्स हमारे इंडिया देश को बोलते हैं कि बाहर के लोग जो विदेशी इंस्पिरेशनल माइंड एंड 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स, 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स। मोदी साहब का कहना है कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप कह रहे थे कि आजादी शायद 2014 के बाद मिले है कुछ लोगों का, तो उनका कहना कि सचमुच हमने 2014 के बाद 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स दिया इस देश को। पूरे दुनिया में लोग अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि 1 मिलियन इंस्पिरेशनल माइंड एंड 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स। क्या डू यू बिलीव ए ट्रांसफॉर्मेशन है हनुमंत पवार साहब? डू यू बिलीव मोदी जी व्हेन ही सेज आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? झूठ बोलने में मोदी जी का हाथ इस देश में अभी के वक्त में कोई भी पकड़ नहीं सकता। झूठ बोलते हैं मोदी जी। मैंने अगर एक उल्टा सवाल आपको, चलो मैं एंकर हूं और आप बैठे हो आगे, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है? यूनो के प्रेसिडेंट ने बोला है? यूनिसेफ के प्रेसिडेंट ने बोला है? किसने बोला? भाई है कौन लोग, कहां से आते हैं ये, कौन है लोग जिसने बोला? हमारे देश में जिन्होंने इनको चुन के दिया है वो लोग इस वक्त क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये मुझे ज्यादा मायने रखता है बल्कि दुनिया क्या कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कहते ही नहीं भाई, दुनिया वाले तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पे अटैक हो रहा है ऐसा बोलते हैं, ये हमको सुनने में आता है। दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है वो तो अदानी का स्कैम पे बोलते हैं, ये हमें सुनाई देता है। तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, ये मोदी जी जो असल में दुनिया वाले बोलते हैं उसके ऊपर मोदी जी कुछ बोलते नहीं। जो दुनिया वाले बोलते ही नहीं है वैसा दुनिया वालों ने बोला है ऐसा यहां बोलते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि भाई हमारे देश के किसानों ने आपको चुन के दिया है, तो वो कहते हैं कि आपने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। इस देश की लड़कियां खिलाड़ी इन्होंने आपको वोट दिया, उनको आप लाठियों से मार रहे हो, हमारे रेसलर को। हमारे महाराष्ट्र के मराठा कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उनको जाके आप मार रहे हो। यहाँ के माइनॉरिटी में से बहुत सारे तबके ऐसे थे जो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास आप बोले तो उनका भरोसा था, तो आपने एनआरसी सीए लाके उनको देश से बाहर करने का और उनको भी लाठी आपने बरसाई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, वहां के स्टूडेंट पे आप लाठियां बरसा रहे हो। मध्य प्रदेश में जो पटवारी है उन्होंने भी आपको वोट दिया होगा शायद, उनको आप लाठियां बरसा रहे हो। जम्मू कश्मीर में तो एक पीडीपी ऐसी पार्टी थी जिनके साथ आप सत्ता में थे, उन पीडीपी के लोगों को आप जेल में डाल रहे हो। तो भाई देश में जिन लोगों ने आपको चुन के दिया है, वोट दिया है, वो सब पे एक करके आपने तो लाठियां बरसाई है। यहाँ का दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मराठा कम्युनिटी जैसी कम्युनिटी हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी मांगने वाला यूथ हो, इन सब पे आपने लाठियां बरसाई। ये असलियत हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की। हनुमंत बाबा साहब ये बताएं, जो अभी रिजर्वेशन की बात हो रही है और ये कहते हैं कि भाई अभी they'll come out with a what's it and
Kunbi, yeah. और GR और problem. गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है अभी लेकर के आ जाएंगे वो सर सिर्फ लॉलीपॉप है कि असल में कुछ होने वाला है वहां पे कि असल में विल दे बी एबल टू गिव रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन दे पाएंगे या नहीं? मैं खुद मराठवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, जहां ये आंदोलन अभी चालू है, मेरे बाजू के ही डिस्ट्रिक्ट में जालना में चालू है। मैं खुद मराठा कम्युनिटी से हूँ। मराठाओं में जो खेत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनके पास खेत भी नहीं है, उस कम्युनिटी से मैं आया हुआ हूँ। बकरियां चरा के दूसरों के खेत में मजदूरी करके पढ़ के मैं आया हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि मराठा कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है, मराठा यूथ का प्रॉब्लम क्या है, मराठा कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या है। कई सालों से मराठा रिजर्वेशन की मांग महाराष्ट्र में उठती रही है। मैं भी उनमें शामिल था। मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो मांगने का हक और अधिकार संविधान ने मराठा कम्युनिटी को दिया है। इस हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के हर एक कम्युनिटी को अपनी मांग सरकार के सामने रखने का अधिकार है। ये है उस अधिकार के तहत महाराष्ट्र में 58 ऐसे मोर्चे हुए, ऐसे आंदोलन हुए जिसकी दखल पूरे दुनिया ने ले ली। एक भी जोर से घोषणा दी नहीं गई, एक भी लाठी, एक भी पत्थर नहीं उठाया गया। पुणे में मैं मराठा आंदोलन में था, मेरे धाराशिव जिला उस्मानाबाद में था, मैं औरंगाबाद के मराठा मोर्चा में था। 10-10 लाख लोग, 7-7, 8-8 लाख लोग एक साथ चलते थे, अपनी मांग सरकार के सामने रखते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मसले है, कोई लीगल तरीके से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था मराठाओं को अलग से रिजर्वेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सका और अभी मराठाओं की मांग जारी है, लड़ाई जारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का तो आरक्षण निकाल के मराठा कम्युनिटी को चाहिए, ऐसी मांग हमने की नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस दिन जालना जिले में हमारे मनोज जरंगे, इनके गांव में जो आंदोलन था, वहां जो लाठियां, गोलियां फडणवीस सरकार ने, अजित पवार सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने बरसाई, लाठियां, गोलियां, ये जो सब मामला है, तो मुझे ये शक है कि मराठा कम्युनिटी वर्सेस ओबीसी कम्युनिटी, इनके बीच में झगड़ा लगाने का कुछ तो षड्यंत्र महाराष्ट्र की जो अभी तीनों की गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मोड़ तोड़ के लाई है, उनको लोगों के सामने जाने के लिए, वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलो मराठा और ओबीसी कम्युनिटी में झगड़ा लगाते हैं, ये सोच के उस दिन निहत्थे लोगों पे साइलेंसली पूरा शांततामय तरीके से, जो बाल बच्चे थे, जो बूढ़ी औरतें थी, जो बुजुर्ग लोग थे, जो युद्ध था, इनके ऊपर पुलिसों ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। जालियनवाला बाग का हमें याद आए ऐसी लाठियां इन्होंने बरसाई। तो मैं आपके चैनल पे आरोप है मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे कि मराठा और ओबीसी कम्युनिटी में झगड़ा लगाने का ये प्रयास था। एक दूसरी बात, आपको अगर शायद याद होगा तो पिछली बार मैं आपके चैनल पे आया था, बात रख रहा था, तो मैंने आपको आपके चैनल पे बताया था कि महाराष्ट्र में 1 महीने से बारिश गायब है, बारिश नहीं पड़ रही, अकाल गिर रहा है, वहां पानी पीने को नहीं मिल रहा, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा, और पूरी फसल, एक ही सिर्फ सोयाबीन की फसल 50 लाख हेक्टेयर पे सोयाबीन की फसल है जो बारिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। 42 लाख हेक्टेयर कॉटन का सब जमीन था जिसके ऊपर कॉटन की लागत की थी, वो पूरा उद्ध्वस्त हो गया, ध्वस्त नष्ट हो गया है। तो ये जो ड्रॉट का जो संकट है उसको सामने जाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी नहीं है, उनका बिल्कुल उसके ऊपर नियोजन नहीं है, उनकी मंशा लोगों को जाके कुछ तो मदद करे ये नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में ये जो अकाल का मुद्दा है ये भारी पड़ सकता है, लोगों में इसके ऊपर नाराजगी है। ये दबाने के लिए अचानक से उठ के हजारों पुलिस जाती है, जहां 200-300 लोग बैठे थे वहां जाके लाठियां बरसाती है, उनको मारती है, गोलियां बरसाती है। तो ये 2 वजह से मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ओबीसी और मराठा में झगड़ा लगाने के लिए, और जो अभी मराठवाड़ा विदर्भ में जहां ये आंदोलन का वो जिक्र कर रहे हैं, वहां का जो खेती का जो संकट है उसके ऊपर बीजेपी सरकार और शिंदे अजित पवार सरकार को कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोगों के सामने आना नहीं, इसके लिए ये मसला इन्होंने खुद खड़ा किया है। पवार साहब, ये विजय विदेटीवार कांग्रेस ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस तो फ्लिप फ्लॉप हो गया थोड़ा। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटा में से ये आप कर सकते हो
विदेटीवार साहब ने कहा था, मगर दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, बिकॉज भुजबल साहब ओबीसी लीडर है, मास ओबीसी लीडर है, उन्होंने कहा यह असंभव है, यह नहीं हो सकता, अगर यह हो गया तो एक बहुत बड़ा ओबीसी आंदोलन पूरे स्टेट वाइड में हो जाएगा। फिर जो आज भी जो ओबीसी के लीडर है ताईवानी साहब, उन्होंने क्लियर कट एक चेतावनी दिया है कि आपने अगर ओबीसी को स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश किया तो पूरे स्टेट में आंदोलन होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स के भी एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट यहां वहां होता रहता है। ये व्हाई इज इट हैपनिंग हनुमंत पवार साहब? नहीं, अब ये विजय वडेट्टीवार साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े जुझारू लीडर है, गरीब कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से आए, विदर्भ से है। जिस दिन वो मनोज दर्गे से हमारे भाई से मिलने गए थे, वहां किया हुआ आप भी अभी भी वो इंटरनेट पे टीवी चैनल पे वो पूरा है। उस भाषण में वो स्पष्ट तरीके से कहा है कि कम्युनिटी को ओबीसी कोटे आरक्षण दो, लेकिन उससे पहले संसद में एक तो जो घटना दृष्टि के तहत जो आरक्षण बंद वो उठा आरक्षण कोटा वो बात से आरक्षण दीजिए। तो विजय वडेट्टीवार साहब का दिन का जो था वो के तोड़ के मोड़ के रखा। क्या बोले कि जिंदा ओटी रिजर्वेशन को भाग नहीं दूंगा, लेकिन इसे का तक्का मराठाओं को भी दीजिए। तो इसमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें कुछ भी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी वडेट्टीवार साहब ने कल कुछ बोला था और आज कुछ बोला था, ये बात तो नहीं है। हमारी पार्टी यही मांग करती है कि संसद का सत्र अभी चालू है, 18 तारीख को संसद का सत्र बुलाया है, तो उस संसद के सत्र में आप रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा के लो और मराठाओं को आरक्षण दे दो। लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं हो सकती, शायद उसकी आवश्यकता है क्या एक्चुअली स्पीकिंग हनुमंत पवार साहब, क्योंकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण तो है पहले से ही, सिर्फ 31% जनरल सीट से मानता हूं जी। कब दिया था वो? जब संसद में ये कायदा पारित नहीं हुआ था, तब राज्य जो है, स्टेट जो है, वो आरक्षण की मर्यादाएं उनके अधिकार क्षेत्र में बढ़ा सकती थी। तब कर्नाटक ने किया है, मध्य प्रदेश में शायद थोड़ा है, और तमिलनाडु का तो आपने उदाहरण दे दिया जी। पिछले साल, 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो स्टेट को रिजर्वेशन देने का अधिकार था, वो घटना दुरुस्ती करके, 102वीं घटना दुरुस्ती है, वो घटना दुरुस्ती करके स्टेट से वो अधिकार छीन लिया। वो अधिकार अब संसद के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो मराठा रिजर्वेशन का मसला संसद में है। अब संसद का अधिवेशन 18 तारीख को आपने बुलाया है, यहां मराठा अधिवेशन जोरों पर है, और आपको लगता है कि मराठाओं को न्याय मिलना चाहिए। हर दिन टीवी पे आके फडणवीस साहब, अजित दादा और एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं, तो हम तो राह देख रहे हैं कि 18 तारीख को वो विधेयक लाए। और हमारे वडेट्टीवार साहब ने, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके अशोक चौहान साहब ने, पृथ्वीराज बाबा ने, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना बाबू पटोले, इन सब बड़े लोगों ने कहा है कि हम कांग्रेस की जो सेंटर के लीडर है उनको बता के हम वहां पाठिंबा देंगे। अगर रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाने का बिल बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार लेके आती है, तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। लेकिन हनुमंत पवार साहब चलिए ये भी बता दें, क्योंकि अभी जो आपने बात करी है अंदर की बात, जो लोग आज की तारीख में बात कर रहे हैं अलग चैनल्स पर, अलग अलग अखबारों पर, स्पेशली मराठी अखबारों में ये बात चल रही है कि ये जो लाठीचार्ज हुआ जालना में, पीसफुल क्राउड था, शांति, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम आकर के पुलिस ने वहां पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। मतलब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। ये था कि शायद ये 3 लोगों में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार में, जो शायद इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है, शायद उसकी वजह से है। वो आपके पास कोई ऐसी खबर है क्या? ये देखो, मेरे पास तो सरकार में किसका झगड़ा किसके साथ है ऐसी कोई भी खबर नहीं है, लेकिन मैं छोटा कार्य करता हूं पॉलिटिक्स में, 10-11 साल मैं काम करता हूं, लेकिन हमारे बुजुर्ग थे, एक मेरे चाचा जी के दोस्त थे, वो कह के गए थे, मुझे पूरा याद है अभी, वो कहते थे कि
बुरे तरीके से अगर बुरे लोग एक हो जाते हैं तो वो ज्यादा दिन एक रह नहीं सकते। ये उन्होंने बोला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ये बुरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को, महाराष्ट्र के जनादेश को, अपनी अपनी पार्टियों को फंसा के ये इकट्ठा हुए लोग हैं। तो इनमें तो झगड़ा तय है, इनमें तो स्पर्धा तय है, इनमें तो एक दूसरे को नीचे खींचना तय है। अगर उसकी शुरुआत इस मसले से है तो मैं इस गंभीरता से एक मराठा कम्युनिटी का लड़का बोल के, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बोल के, अगर आपसी जो झगड़ा है, आपका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप डर्टी पॉलिटिक्स है इंटरनल आपका, आप में अगर स्पर्धा है कि कौन सीएम बनेगा, किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी आएगी, तो इसका झगड़ा आप अंदर बैठ के आप करिए। उसकी सजा हमारी माँ बहनों को, बेटियों को, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को मत दो। आज सुबह एक चैनल पे मैंने एक वीडियो सुना, 70 साल की बूढ़ी औरत है उस गांव की, सराठी गांव की, जो गले में जो वारकरी संप्रदाय की भगवान विठल की जो माला रहती है, उसकी कसम खा के वो कह रही है कि हमारे गांव में किसी ने भी पत्थर पुलिस के ऊपर फेंका नहीं, किसी ने भी पुलिस को हाथ तक नहीं लगाया। हम मंदिर में बैठ के भजन कर रहे थे, हमारी छोटी बच्चियां वहां सोई थी, हम वहां बैठ के बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी वहां भजन कर रहे, तो पीछे से आके पुलिस ने हमें मारा, पीटा, आंख फूटी है किसकी, किसका सर फूटा है, किसका कान टूटा है, किसका हाथ टूटा है, गोलियां मारी इन लोगों ने। तो ये जो है महाराष्ट्र भूलने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब लद्दाख में जाके आए, देवेंद्र फडणवीस साहब नासिक में जाके आए, वो महाराष्ट्र का बड़ा लीडर खुद को समझते हैं, उनको बहुत गुरूर है लीडर रहने पे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई मराठवाड़ा के एक भी डिस्ट्रिक्ट में आने की। आप अगर उसका जालना जिला, औरंगाबाद जिला, उस्मानाबाद या लातूर जिले में आओगे तो आपको पता चलेगा लोगों में गुस्सा कितना भरा हुआ है। ये लोगों को वोट मांगने भी अपने दरवाजे पे आने नहीं देंगे, इतने बुरे तरीके से लोगों ने इनका मार झेला है, इनकी गोलियां झेली है। तो ये जनरल डायर, उसमें फडणवीस हो, पवार साहब हो, वो अजित पवार साहब, या एकनाथ शिंदे साहब हो, इन तीनों में से एक कोई तो जनरल डायर है या तीनों ही जनरल डायर है, ये तो हमारा कहना है। पवार साहब, एक बहुत बड़ा सस्पेंस, आज सोनिया गांधी जी ने लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डायरेक्टली। सोनिया गांधी जी ने कहा कि ये सस्पेंस है, ये क्या है, स्पेशल सेशन किस लिए बुलाए, पहले बार है स्पेशल सेशन बुला रहे हो, एजेंडा क्लियर नहीं है, तो एजेंडा क्या हो सकता है। तो उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने लेटर में लिखा है कि आप प्राइस राइज एक एजेंडा बनाओ, अनएम्प्लॉयमेंट बनाओ, फॉलिंग इनकम्स बना दो, फार्मर्स जो अत्याचार हो रहा है उस पर करो, एमएससी शटडाउन उस पर करो, चाइना को क्लीन चिट आपने दिया उस पर करो, मोडाली स्कैम पे कर दो, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन उस पर करो। तो क्या अभी ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वुमेन्स रिजर्वेशन है, या फिर ये महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इस प्रकार से एक, तो क्या है सोनिया जी जिस प्रकार से लेटर लिखते हैं, क्या देखते हो हनुमंत पवार जी, आप क्या समझाए उसमें। अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार ने सेशन बुलाया है तो अपोजिशन को उसकी पूरी कार्यक्रम पत्रिका जानी चाहिए, ये तो बकायदा जाती है, जानी चाहिए। इस बार सेशन बुलाया है लेकिन ऐसा कुछ भी अपोजिशन के जो लीडर है उनको कुछ उन्होंने लिख के भेजा नहीं, पूरी कार्यक्रम पत्रिका नहीं है, क्या कामकाज होने वाला है, कैसा चलने वाला है, कौन से बिल लाने वाले हो, कुछ भी बताया नहीं गया। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो सोनिया जी ने हमारे लेटर लिखा है उसका उत्तर भी गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। वो उत्तर है कि हमने सेशन नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट ने सेशन बुलाया। तो ये मान के चलिए कि मोदी जी में जो वो क्या बोलते हैं, चलो कुछ तूफानी करते हैं, कभी नींद से उठ के नोटबंदी करते हैं, कभी रात में उठ के एनआरसी लाते हैं, कभी 12 बजे जीएसटी लाते हैं, उसमें 1000 बार फिर अमेंडमेंट लाते हैं। तो ऐसा कुछ तो तूफानी करके लोगों को गुमराह करे, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो किसान खेती पे जो संकट आया है, इसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ तो तूफानी करो। ऐसा कुछ तो करने की मोदी साहब की मंशा होगी, लेकिन मोदी साहब 9 साल से देश आपको देख रहा है, आपके सब जुमले जो है वो लोगों पे अब नहीं चलने वाले हैं। आपको सीधा लोगों को रोजगार के बारे में बोलना चाहिए, प्राइस राइज के बारे में बोलना चाहिए, महंगाई के बारे में बोलना चाहिए। और हनुमंत पवार साहब, दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है पूरी हिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री पूरे देश की अगर आप देख लें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है
कि कोई भी पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन हो या नॉर्मल जो पार्लियामेंट सेशन होता है वो हो, बिना एजेंडा के आज तक कभी कोई भी सेशन बुलाया गया हो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए साहब, आज क्या तारीख है? टुडे 6 सितंबर। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। अभी 12 दिन बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एजेंडा सबको मिल जाएगा पार्लियामेंट सेशन के पहले। मैं सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकता हूं, बिकॉज देन इट विल बी अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक parliamentary and constitutional norms. This is not done. There are certain things which are not done, sir. जी, 9 साल में ऐसी कितनी बातें मैं आपको गिन के सुना सकता हूं कि वो पहले कभी हुई नहीं थी। 9 साल में 9 साल में ऐसा कोई एमपी संसद में बैठा था जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा हो, लड़कियां रेसलर वहां धरने पे बैठी हो, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी नाक कट रही हो, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए एक गुना दाखिल करने के लिए भी राजी नहीं हो रहे थे। 1.5 साल लड़कियां हमारी जो ओलंपिक मेडल जीत चुकी थी वो झगड़ रही थी। सिर्फ चौकसी करने के लिए, गुना दाखिल करने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दलित लड़की पे बलात्कार होता है और उसका जो शव है वो उसको घर वालों को दिए बिना परस्पर जाके पुलिस चलाती है। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिस स्टेट के बारे में बिल पार्लियामेंट में आता है उसी स्टेट के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेल में डाला जाता है और उसी स्टेट के बारे में बिल पे चर्चा होती है। 370 के बारे में हमने कश्मीर के देखा। 70 साल में, 75 साल में ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ था कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट को जलते हुए 3 महीने 4 महीने सिर्फ देखता हो, सिर्फ देख रहा था। इस देश में 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसानों के ऊपर बुलडोजर चला के उनको मारा कुचला जाता है और उसका ही जो लीडर है, जिसका बच्चा है, उसके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं होता, उसको किसी को कोई वो आंसरेबल नहीं रहता। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है हमारी सिस्टम में। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी, जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ तो ऐसा एक रात में धोरण लाया, उसके वजह से पूरा हमारा इकोनॉमी का 12 बज गए। नोटबंदी के बारे में ऐसा हुआ था, 12 के 8 बज गए। इसी 8 बजे 12 बजे थे। 7, मुझे पता है 7 नवंबर तारीख, शायद 7 नवंबर ना, मैं अगर जी करेक्ट, 7 नवंबर, 8 नवंबर सर, 8 नवंबर 8 बजे को, 8 नवंबर 8 बजे 2016। हाँ, तो 8 नवंबर को 8 बजे इंडियन इकोनॉमी के 12 इन्होंने बजाए थे। और कभी ऐसा हुआ था कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर बोला था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौराहे पे जाके फांसी दे दो, लेकिन आए ही नहीं मोदी साहब चौराहे पे, लोगों की जानें चली गई। 70 साल में ऐसी कितनी बातें नहीं हुई थी, ये पहली बार। ऐसा 70 साल में कितने हमने सैटेलाइट आसमान में छोड़े, कितनी साइंस पे कितने हमने काम किया, लेकिन आधे स्क्रीन पे जब हमारा यान चांद पे उतरने वाला था तो आधे स्क्रीन पे प्राइम मिनिस्टर झंडा लहराते हमने देखा नहीं था 70 साल में। मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, अभी फाइनल के मैच में भारत तो जाएगा ही, हिंदुस्तान इंडिया फाइनल में जाएगा ही। उस फाइनल मैच में आधे भाग, स्क्रीन के आधे भाग में मैच चालू होगा और आधे भाग में मोदी जी ऐसा झंडा लेके बैठे होंगे, और धोनी जब सिक्सर मार के मैच जीतेगा तो धोनी हट जाएगा। धोनी रिटायर हो चुका है सर, धोनी रिटायर हो चुका। मैं 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जब धोनी ने 6 मार के जीता था। अगर मोदी तब रहते तो आधे स्क्रीन पे मोदी दिखते और आधे स्क्रीन पे धोनी। अनुराग पवार साहब जो बोल रहे हैं आप सच है। मोदी साहब बोल रहे हैं कि G20 प्रेसिडेंसी से देखो हमने क्या किया, 220 मीटिंग 60 सिटीज में किए, 28 स्टेट्स में हम लोग पूरे कार्यक्रम को लेके 8 यूनियन टेरिटरी, 1 लाख लोग जुटे, साथ में 125 अलग अलग देश से लोग आए और 1.5 करोड़ लोगों को, अपने देशवासियों को फायदा हुआ। बोला आगे जाके बोल रहे कि 13.5 करोड़ लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठा खींच के ले लिया है। बोले कोविड में 200 करोड़ डोसेस हमने फ्री दे दिए और शिप किया 150 देशों में, विदेशों में हमने ये वैक्सीन भेजा है। इन्फ्लेशन, बोले कि कांग्रेस चिल्ला रहा है इन्फ्लेशन। आज इस देश का इन्फ्लेशन
विश्व का ग्लोबल इन्फ्लेशन से 2% कम है, बोले कि ये तरक्की है, मोदी साहब बोल रहे हैं। यू नो, हाउ डू यू सी? एक जगह सोनिया गांधी जी के लेटर है और दूसरे मोदी जी के जवाब है। सर पवार साहब, मोदी जी को अगर जवाब देना है तो जो गैस के 1200 रुपए 1250 रुपए जो औरत दे रही है बेचारी, उसको आके जवाब दे। चैनल में मन की बात करके, और जो एडिटर आपने बेच के खरीद के लिए हो चैनल और चैनलों के मालिक, उनके ऊपर जाके जो आपकी प्रेस नोट है वही न्यूज बोल के जो पढ़ के रहे, उनको सवाल देने से कोई मतलब नहीं। जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, उसका सवाल का जवाब मोदी साहब कब देंगे? एक खाद की जो गोनी है जो मैं पहले 450-500 में लेता था, वो अब 1800 में 1900 में हो गई है। जो बीज है सोयाबीन का, जो बीज मैं 750-800 में लेता था, वो अब 1400-1500 में गिरा है। ये किसान के सवालों का जवाब मोदी कब देंगे? नौकरी मांगने वाले बेरोजगार के सवाल का जवाब कब देंगे? 200 रुपए में टमाटर लेने वाले औरत के महंगाई के ऊपर सवाल का जवाब मोदी साहब कब देंगे? ये जवाब हमें चाहिए ना। हमने चुन के दिया है, किसानों ने, यूथ ने चुन के दिया है। जो व्यापारी है, जो जीएसटी से उनका पूरा कमर तोड़ दिया है उनके बिजनेस का, उनके सवाल का जवाब मोदी साहब कब देने वाले हैं? 5-5 हजार सिटी बैंक के 5-5 हजार करोड़ रुपए आप एक ही दिन में राइट ऑफ कर रहे हो, इसके ऊपर मोदी साहब आप कब बोलने वाले हो? इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके दाम धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन इधर हमारे पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ते ही जाते हैं। इसके ऊपर मोदी साहब आप कब जवाब दोगे हमें? हमारे जीएसटी का, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो आप पैसे लौटाते ही नहीं थे। अभी भी आप लौटाते हो कि नहीं लौटाते पता नहीं है। तमिलनाडु के पैसे लौटाते नहीं हो आप, केरल के पैसे लौटाते नहीं हो, कलकत्ता के पैसे, पश्चिम बंगाल के पैसे आप लौटाते नहीं हो। जीएसटी से हमसे पैसे तो लेते हो और हमारे स्टेट को पैसे देते। इसके सवाल के जवाब कब दोगे मोदी साहब? इंटरनेशनल लेवल पे ये सवाल तो आप पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं मानता हूं आप हर एक का सवाल जायज है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी बोलती है कि 2014 के बाद जो विकास देखा है देश ने, आज तक कभी नहीं देखा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सर आप ये बताएं, बीजेपी वाले बोलते हैं हर एक कोई, जो मर्जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, नेता हो, वक्ता हो, अधिवक्ता हो, जो भी हो, हर एक कोई यही बोलता है कि मोदी जी विल बी बैक इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस विद 350 प्लस सीट्स। बीजेपी की 350 सीट आएंगी। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? इंडिया की कितनी सीटें आएंगी? मत जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एनडीए की कितनी सीटें आएंगी आपके मुताबिक? भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर हो जाएगी 2024 को। इंडिया अलायंस, उसमें कांग्रेस हो या सभी हमारे साथ जो पार्टियां जुड़ी है, अभी 28 है, एक जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का पराभव हमारे इंडिया अलायंस के लोग करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं कि 2024 को बीजेपी सत्ता में आएगी ही नहीं। बीजेपी आएगी नहीं। मोदी साहब अब चुनाव कहां से लड़े, इसके ऊपर अभी मोदी साहब महाराष्ट्र में पुणे में आए या फिर वाराणसी चले जाए या फिर गुजरात में ही रहे, ये मोदी जी अभी सुन रहे, अभी इसके ऊपर विचार चल रहे हैं। हमारे भी सोर्सेस रहते हैं, हमको भी पता चलता है कहां क्या होने वाला है। बीजेपी में भी मोदी साहब के ऊपर, फडणवीस साहब के ऊपर गुस्सा करने वाले लोग बहुत है, बातें होती है, आपस में हमारा मेलजोल रहता है। लेकिन ये बात तय है कि इस भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं करने वाली है। उनके सर्वे कुछ भी दिखाए, उन्होंने खरीद के लिए हुए मीडिया कुछ भी दिखाए, उनके पर्चे कुछ भी हो, उनकी प्रेस नोट कुछ भी कहती हो, आरएसएस कुछ भी कहता हो, उनके प्रचारक प्रवक्ता कुछ भी कहने दो, जो कर्नाटक में हाल इनका हमने किया वो पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है। बीजेपी का कर्नाटक में जो हाल किया वो होने जा रहा है। कल भारत जोड़ो यात्रा का फर्स्ट शायद एनिवर्सरी है। यस, कल एनिवर्सरी है। वो 7/9/22 को शुरू हुआ था, जब 4081 किलोमीटर, 76 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जाके आपने हासिल बहुत किया। कर्नाटक आपके साथ आगे भी बहुत सारे हासिल अचीवमेंट्स है। तो आगे जाके, जैसे बजाज साहब हमेशा पूछते रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा 2 कब जरूरी है? आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा 2024 में राहुल गांधी जी वापस आना है तो। जी नाम्बियाल साहब, हमारी पहली भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के हर एक जिले में
हमारा हर एक बड़ा लीडर तालुका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को साथ में लेके रोज मराठवाड़ा 10 छोड़ के, किलोमीटर, शायद मराठवाड़ा छोड़ के, मराठवाड़ा ये आंदोलन की वजह से पोस्टपोन किया है। जी जी इतना ही, लेकिन वो भी चालू हो जाएगा थोड़ी दिन के बाद। जी। मैं अब पूना में बैठा हूं। मैं कल से 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 30 किलोमीटर चल चुका हूं। अभी आपके चैनल पे आने से पहले मैं गया था वह कस्बा जो मतदान संघ है जहां हमने बीजेपी का गढ़ था 30-35 साल, जहां हमने धूल चटाई बीजेपी के कैंडिडेट को बाई इलेक्शन में, वहां हमारे आज पदयात्रा हुई। जनसंवाद पदयात्रा महाराष्ट्र का नाम है। हर एक महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में हमारे लोग पर्चे लेके बीजेपी ने जो 9 साल में जो झूठे वादे किए थे उनका जो बुरका है वो हम फाड़ रहे, लोगों में जा रहे हैं, बातें कर रहे, लोगों का गुस्सा हम उनसे, उनके मुंह से हम सुनते हैं। लोग कांग्रेस का पर्चा लेते हैं, कांग्रेस का झंडा हाथ में लेते हैं, फोटो निकालते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में अच्छा बोलते हैं। आप डटे रहो, एक अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बीजेपी से लड़ रही है, इसके लिए हमारी पीठ, यहाँ का जो वोटर है वो थपथपाता है। तो आप कस्बा पेट में थे आज, कल कहाँ होंगे सर? कल हमारा पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा का जो पहली सालगिरह है भारत जोड़ो यात्रा की, वर्धापन दिन है पहला, तो वो बड़े जोर शोर से, जोश से कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल पुणे में शिवाजी नगर मतदान संघ में, पुणे में हमारे कांग्रेस हिस्टोरिकल कांग्रेस भवन है, उसके बाजू में बड़ा जुलूस निकलने वाला है। पूरा कांग्रेस सिटी का एक होने वाला है। ढोल बजाएंगे हम, मिठाइयां बांटेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसको सुरुंग लगाने का काम, उसको अगर बारूद लगाने का काम किसने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा हमारी जारी है, चालू है हमारी भारत जोड़ो और यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अगले महीने से शुरू है सर। जब हमने अब जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसी तरीके से, उसी स्केल पे दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, अभी जो 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से उसका अभी चर्चा है कि कैसा करें। लेकिन हमारे जो इकाइयां है, तालुका इकाइयां, जिला इकाइयां जो है, उनके स्तर पे हमने हमारी भारत जोड़ो यात्रा चालू की है। हम किसानों से मिल रहे हैं, विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, हम महिलाओं से मिल रहे हैं, छोटे व्यापारियों से मिल रहे हैं, राहुल जी भी मिल रहे हैं, आप देख रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। नरेंद्र मोदी साहब के 350 संसद सदस्यों को संसद से बाहर निकालने तक भारत जोड़ो यात्रा चालू है। Wonderful, thank you so much sir. हनुमान पवार साहब, all the very best to you. ऐसे ऊर्जा भरा हुआ नेता जो राहुल गांधी जी के साथ है तो, बट भाई that is true for all congressmen. मैंने देखा है आज की तारीख में, आप माइंड मत करना सर, आपके जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पहली बार मैंने कांग्रेस में ऐसी ऊर्जा देखी है, इतना उत्साह देखा है बड़े सालों के बाद। बहुत मजा आ रहा है। ये नई कांग्रेस है, ये राहुल जी की कांग्रेस है। वंडरफुल, ये नई कांग्रेस है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको। राधे राधे, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। पूरे विश्व को सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ, वो क्या कहते हैं, लोहड़ी के वक्त तिल सड़े पाप झड़े, पाप का विनाश हो, श्री कृष्ण का जन्म है, कंस का विनाश हो, मौष्टिक और चाणूर दोनों स्वर्गवासी हों या नरकवासी हों, जहाँ भी। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक बार भगवान के हाथों अगर कोई चाहता है तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है प्रदीप जी। प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो जिन को श्री कृष्ण ने जिनका वध किया वो सब लोग पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान, उन सबका दोबारा जन्म नहीं होगा, उन सबको मोक्ष मिल गया। तो इसलिए लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण खुद आकर के उनको ऊपर लेकर के जाएं। ऐसी प्रथा है, ऐसी कथा है। इसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे, शायद कल ही बात करें इसके बारे में। बोले ये युग कहता है कि ये युग श्री कृष्ण जिस प्रकार से व्यवहार करता था जी, दैट इज दिस टाइम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहीं और था, बट दिस पर्टिकुलर एंटायर जो एटमॉस्फेयर है, इट इज प्योरली ऑन हाउ लीडरशिप ऑफ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। श्री राम त्रेता में, श्री कृष्ण द्वापर में। और ये देखा जाए कि जो श्री कृष्ण की नीति है वो कलयुग में सबसे अच्छी है, ये कहा जाता है। ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको कलयुग में।
अगर आपको भगवान के आसपास पहुंचना है तो। Let's take a few comments. I think we have a few comments, and do keep sending in your comments. आप अपने comments भेजते रहें. I think we have a few today. Let's take a look. Stop dreaming. India is not for sale. His mother had done enough with Indian-born leaders as puppets. This is Alfred Mesquita 787. I don't think a man called Mesquita would actually say that about the Congress. But anyway, as you pointed out yesterday, we had a comment from Mr. Mesquita yesterday as well. This is next election MP seats. Congress party only 72 seats, pakka confirm, and hat-trick PM pakka confirm. Modi ji, this is the true result, 350 plus 50. Didn't I read this before? I think I read this before. Day before yesterday, I think I read this before. Why are you putting out the same comments again? All these are paid by Soros or by Pakistan, backed by Qatar and other Muslim radicals. That's what Mr. Objective Person 6177 says about the Adani comments. Right. I think he's talking about Adani. This is about Alia Bhatt. Dhamal, she says. All right. Can we move forward, please? Do we have any other comment? Rekha looks magnificent. She always did. रेखा जी बॉलीवुड क्वीन हैं. रेखा मैडम की तरह बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस नहीं है और ना ही आगे होगी. अनुज सक्सेना साहब लिखते हैं. अनुज सक्सेना 1305. मिस्टर अनुज सक्सेना, we agree with you. At least I agree with you. I don't know about you. Wherever these India guys are, whatever these India guys are doing is orchestrated. As a Brajesh Khanna साहब लिखते हैं 968. You think BJP is acting randomly? That is not orchestrated. I mean, I thought BJP planned. You guys were good, Brajesh Khanna, 968. What does that mean? Who is he talking about? Chaliye. Raj Thackeray will be best Maharashtra CM. Let Shiv Sena is not Maratha party, but national party. I am from Tanjavur, Tamil Nadu. We are related to Marathas since our Chola's time. Balasab's party work has been ruined by Uddhav and his family. Thousands of Sena workers sacrificed their lives for him. Congress did its dirty work against Marathas and was followed by his eldest son. He still has some 10% support, but vast majority of Marathas has rejected his cheap politics. The King XP 71Q, or is it 7LQ? He's done a lot of research. Yes, and he's from Tanjavur. Yes. Hello Tanjavur. Hello Tamil Nadu. Saif Ali Khan's son Ibrahim bags his next film. Did he have one? Has he made his debut? Not. Wow, he proved himself with his final film and then being offered second film. Really, they have to go through so much struggle. That's a sarcastic comment, I think, with regard to Saif Ali Khan's son. And this is Mr. Suresh Chandra Rajhans, the Association of Conmen and Brainless Idiots. You know, I think every day we have something to praise you. Always something. Rajneel Karan. आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत है. Just right. They call us conmen and brainless idiots. I am referring to Congress and the India Alliance. He said, this is not about me. I am so sorry. Come on, you can't do that. All right. This is Mr. Dhananjay Junarkar. In a vibrant democracy, everyone has their own views, but India is a shamocracy, so people can't have their own views. Something or the other. Tiro or 2011. Tiro. Right? BJP attack on Udayanidhi Sanatan statement. I am a Sanatan Hindu refugee in Jammu. With the threat of Congress and DMK for Sanatan Hindu genocide, I am feeling threatened. My appeal to Chief Justice of India, of Supreme Court, help to save us from another genocide, as we have escaped one jihadi genocide in Kashmir, and where shall I go? But I know even Milads have no time for me being a Hindu. You refuse to listen to Kashmiri Pandits killings case. This is what Mr. Ashok, can you read the rest of the Ashok Braru. 8845. I've never heard of it. Brar, it could be Brar. Okay, Ashok Brar. It should be Brar. 00848645. Brars are usually Punjabis. They're not from Jammu and Kashmir. But anyway, if he says he's from Jammu and Kashmir, it must be. But that's just about it as far as the comments are concerned. Please do keep sending in your comments. आप अपने comments भेजते रहें. आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं.
श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण के जन्म की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. सो शैल वी से हैप्पी बर्थडे लॉर्ड कृष्णा? शैल वी से दैट और व्हाट वी डू? रग रग में कृष्ण, तन हर तन में रंग कृष्ण, रंग में कृष्ण, तन तन में कृष्ण, कण कण में कृष्ण, क्षण क्षण में कृष्ण. हर चीज में कृष्ण, जहां देखो वहीं कृष्ण, जहां देखो वहीं कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, यही कहिए. और वो क्या है, वो अनूप जलोटा साहब ने वो जो बहुत बढ़िया भजन जो गाया था यहीं पर, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े. ये कहा जाता है श्री कृष्ण का नाम जो है वो बिल्कुल केवट की नाव का काम करता है, आपको भव सागर को पार करा देता है. ये कहा जाता है श्री कृष्ण के बारे में. दैट्स इट, दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोग देख कर रहे हैं नेशन नाउ. नेशन नाउ आपका चैनल है, याद रखें, वी आर ऑलवेज विद यू. प्लीज डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी, प्लीज डू सो. सब्सक्रिप्शन जरूर करें. दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.